तो देखिए सज्जनों, स्वागत है आपका यहाँ पे अलगामो ई स्पोर्ट्स पे। और इस समय आप Experience देख the रहे हैं यहाँ पे movement of मोबा वॉर्मअप क्लैश, suffering. यानी कि आज जो सीरीज यहाँ पे चल रही है वो थोड़ी स्क्रीम्स की तरफ जाती हुई दिखेगी। थोड़े से जो स्क्रीम्स के मैचेस है वो हमें आते हुए दिखेंगे। और उसी के साथ बात कर रहे थे हम लोग कि जिस तरीके के जो बैन्स हमें आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे लैंसलॉट उठाया गया है टीम वेलियंट गोल की तरफ से, और पहला पिक यहाँ पे उठाया गया है लैंसलॉट। और मेरे प्रिय मित्र भी हैं यहाँ पे, वेलियंट गोल्स की I'm तरफ से not the खेलते हैं, only कियोशी इनका one नाम है। bound by काफ़ी these अच्छे तरीके से लेंस chains. खेलते हैं और काफ़ी अच्छा खासा मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस है उनको अपने लेंस के ऊपर। बात की जाए मेटा पे, तो मेटा पे लेंस अभी काफ़ी मैं कहूँगा बिल्कुल ही नहीं चलता है। लाइक बहुत ही रेयरली आप देखोगे कि मतलब पिक रेट अभी लैंसलॉट का पूरा गिर चुका है। लाइक उसका जो सस्टेन था, उसका जो This एक land is तरीके a से आप बोल सकते हो homeland, कि and it will आपको soon मेहनत be a एक्स्ट्रा करनी burial पड़ेगी लेंस ground. पे। आपको एक फार्म गैप, वो You've been लेवल गैप amazing लेके for आना so पड़ेगा, तब long. जाके आप जो है अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दे पाओगे। Come on, दूसरी साइड की Dexter. बात करें It's our यहाँ पे, showtime. तो टीम योर वो यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। ग्रॉक इनिशिएटर आते हुए Fight! दिखेंगे। उसके Fight for साथ-साथ the सीसी से ultimate बचने के लिए answer. यहाँ पे लापू-लापू का आगमन होगा। उसके साथ-साथ पोक Magic करने is के लिए my ग्रेंजर way. आएँगे। ग्रेंजर आपने उठा लिया, लेकिन ग्रेंजर थोड़ा लेट भी आप उठा सकते थे अगर Come on, चाहते तो। join me लेकिन अर्ली in गेम पे my आपने उठा लिया, dream पोक करने के world. लिए उठाया होगा। और चलिए यहाँ पे जो मैं सोच ही रहा था वो थोड़ा-सा काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पे आ चुका है, जो लूनॉक्स के तौर पे आते Pain देखिए तो काफ़ी is the ज़्यादा एक proof that तरीके से आप I'm बोल सकते still हैं कि डाइव alive. सेंट्रिक जो है ड्राफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि इनिशिएटर यहाँ पे ग्रॉक रहने वाले हैं, पीछे से यहाँ पे जो है फिर लूनॉक्स चार्ज करती हुई दिखेगी हमें डैमेज फॉर्म में। तो काफ़ी ज़्यादा पोक और डाइव इन कॉम्प हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी साइड की बात करें टीम वेलियंट गोल्स की, तो उनकी तरफ से मैं कहूँगा बैलेंस मेरे को जो है वो देखने को मिल रहा है। सस्टेन उनके पास है, सीसी उनके पास है, डिसएंगेज उनके पास है, उसके साथ-साथ रेंज उनके पास है डैमेज देने के लिए, और बैकलाइन को पकड़ने के लिए लैंसलॉट वहाँ मौजूदा रहेंगे। लेकिन अगेन ये गेम जो है काफ़ी रोमांचक भरा होने वाला है। ओह! डेफ़िनेटली। एक बात है कि वेलिंग रूल्स ने फोवियस अपने हाथ पे लिया है एंड एनिमी को नहीं दिया, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इवन दो लैंसलॉट वाज़ द फर्स्ट पिक, सो टीम नोआ रहता बहुत ऐसा है कि जो कम्फर्ट पिक्स में खेलना चाहती है एंड ऐसे पिक्स उठाए हैं कि वो डेफ़िनेटली मेटा पे है। सो इंटरेस्टिंगली देखना पड़ेगा आज कैसे परफ़ॉर्म करेंगे। एंड वापस से आप सब लोग को याद करते हुए ये बेस्ट ऑफ 3 सीरीज़ होने वाला है, तो मतलब टीम को और एक-एक चांस मिल सकती है सिंस दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट गेम। जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से गेम की पारी यहाँ पे पलटने वाली है, थोड़ी-सी इमेजिन कर सकते हैं कि अर्ली गेम में थोड़ी स्किमिश आती हुई दिख सकती है हमको। डिसएंगेज के तौर पे वलेर है, जहाँ पे उनके पास बर्स्ट नहीं रहेगा। एक जो दिक्कत थोड़ी-सी हो सकती है टीम वेलियंट गोल्स को, वो बर्स्ट की कमी रहेगी। आप देखेंगे कि सस्टेन टाइप का डैमेज यहाँ पे रहने वाला है टीम वेलियंट गोल्स की तरफ से। बर्स्ट जो है काफ़ी मैं कहूँगा लेट जाएगा। एमएम की तरफ कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा हमें जो गेम सेंट्रिक हमें देखने को मिलेगा कि आपका जो यहाँ पे एमएम है, अगर वो फार्म अप हो जाता है तब जाके वो डैमेज दे पाएगी, और वो भी सिंगल शॉट यहाँ पे डैमेज देते हुए देखेंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टारगेट को यस वो कर सकते हैं, फर्स्ट किल से अगर मल्टीपल टारगेट हिट होते हैं तभी कर पाएंगे, वरना सिंगल टारगेट ही एक तरीके से आप बोल सकते हो। लेन क्लियरिंग एबिलिटी की बात की जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूंगा कि ठीक है, ज्यादा बेहतर नहीं है। दूसरी साइड की बात करें तो वहां पे टीम न्यूयॉर्क के पास ना अच्छा खासा एक तरीके से मैं कहूंगा कि उनके पास एक मौका है, लेन क्लियर अच्छे से कर सकते हैं वो लूनॉक्स के थ्रू। तो आपको एक मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अच्छी खासी। और मैच का जो है आगमन वो स्टार्ट होता हुआ जाएगा। लैंसलॉट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ब्लू की तरफ गए और ब्लू यहाँ पे फटाफट लेते हुए देखेंगे। तो रोटेशन जो है हमें नीचे यानी कि एक्सपी की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। उसी के साथ मैच जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो है वो जाता हुआ दिखेगा। मिड लेन की बात करें तो थोड़ी सी वहां पे कशमकश होती हुई हमें दिखेगी मिड लेन पे। और एक बार जरा वहां पे नजरें जरूर गंवाना चाहेंगे। दूसरी साइड की अभी बात की जाए तो स्टार्टिंग में यही रहता है कि लैंसलॉट को फार्म करना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से जो ये फार्म गैप उनको एक हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे वाईएसएस है। वाईएसएस मैं कहूंगा गेम के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट जंगलर में से एक है, जो बहुत ज्यादा लेन जो है इजीली जो क्रीप्स लेने में सहायक होते हैं, और बहुत ही इजीली जो है लेवल 4 यहाँ पे हो जाते हैं। और चलिए उसी के साथ यहाँ पे पॉज की डिमांड करी गई थी, लेकिन उसी के साथ वो पॉज वहां पे रिज्यूम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो इशू आ रहा था वो वहां पे तुरंत ही आई थिंक फिक्स हो चुका है उनका। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रॉक की तरफ से पोक आता हुआ देखा मिड लेन की तरफ। ओके, सो फार फर्स्ट ब्लड नहीं हुआ है एंड देयर इज़ लाइक अ हाई चांस टॉप लेन पे हो सकता है। दोनों टीम काफ़ी सेफ खेलना पड़ेगा, बट यहाँ पर ग्रेंजर्स आते हुए स्टन लगी उन्हें, बट ग्रॉक का वॉल उन्हें फ्लिकर करना पड़ा। ब्रॉडी अभी के लिए सेफ है, बट आगे क्या होगा सिंस रेड साइड काफ़ी स्ट्रांग है ऑन देयर रोटेशन।
जी बिल्कुल। और रोटेशन की बात की जाए तो काफी अच्छा खासा उनका एक इंगेज टाइप अगर आप वो करेंगे नोटिस तो वो काफी अच्छी तरीके से आ रहा है। दूसरी साइड की बात करें टीम विलेन गोल इस समय थोड़ी सी एक मौके की तलाश में कि वो अपना जो एक टेम्पो है वो सेट कर पाए, एक उनको ओपनिंग मिल पाए, और वो ओपनिंग अभी तक मिली नहीं है उनको। दूसरी साइड ये अगर बात करें अभी तो टर्टल यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं और टर्टल की टीम को यहाँ पे फटाफट आना पड़ेगा। फूबियस अभी लेवल 4 हुए नहीं, जैसे वो लेवल 4 होंगे वो भी इधर की तरफ आएंगे, रोटेशन आता हुआ दिखेगा, जोन आउट करना पड़ेगा। जंगलर अभी भी वहां पे मौजूदा हो सकते हैं, सील करने का प्रयास किया जा सकता है, लापो लापो मौजूदा रहेंगे, लेकिन चल वो जाता हुआ दिखेगा कियोशी के हाथ में। लैंसलॉट बचेंगे जरूर, अंदर की तरफ गए हैं, कोशिश रहेगी कि थोड़ी से डैश लगा सके अंदर की तरफ जाते हुए। फैंटम एग्जीक्यूशन यहाँ पे लगाया, जरूर ब्लू बफ लेने का प्रयास, लेकिन वायसस आराम से अपना ब्लू बफ एकदम चिल होकर सेव किया। लेकिन उधर की साइड पे देखना पड़ेगा, बदांग का एक अच्छा सेटअप, फर्स्ट ब्लड लिया जाएगा फेलिक्स यहाँ पे, और उसी के साथ खुद कुर्बान हुए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट किल वो यहाँ पे मिलेगा, यानी कि मेज का किल। आपने रोमर को जरूर धाराशायी कर दिया, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है उसका। दूसरी साइड की बात करें तो वो अभी मेज जा चुका है, तो खाता दोनों ही टीम का खुल चुका है। और अब जो टीम्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है कंपटीशन रहेगा, वो रहेगा फार्म के बीच में। आप एक लेवल और आगे यहाँ पे जा चुके हैं, लेंसलॉट मौजूदा है, कोशिश रहेगी पंचर का इस्तेमाल किया जाएगा, वॉल लगा के रोते हुए फैंटम एग्जीक्यूशन, और उसी के साथ एक और किल। क्या दूसरा किल मिलेगा? जी बिल्कुल, और ये कियोशी का आतंक इस मैच में स्टार्ट हो चुका है। इस लैंसलॉट को आपने जो अर्ली गेम्स जो स्नोबॉल चाहिए था वो मिल चुका है, और 3 किल के साथ यहाँ पे टीम वेलियर गोल इस गेम को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचती हुई। और अभी भी बात की जाए टीम ने और की, तो उनके पास भी अभी मौका है वापसी करने का, वो वापसी कर सकते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक ओपनिंग जो आपने अच्छी खासी वो कहीं ना कहीं मिस कर दिया। अब आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, एक अच्छी टीम फाइट चर्चल की तरफ, आपका जो जो गैप है वो कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा। ट्रू। एंड जो रेड साइड के बारे में बात करें तो उनकी जो ओपनिंग है थोड़ा सा लेट गेम, थोड़ा सा मिड टू लेट आ सकता है। जैसे अभी वेलिंग गुल्स के हाथ पे काफी ज्यादा अग्रेसिवनेस है, जैसे हम देख रहे हैं बॉटम लेन पे भी गैंग करे, इवन दो वो ईएक्सपी लेन है, एंड टॉप लेन पे भी लोग खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो ही लेन पे ही गैंग हो रही है, यहाँ पर ग्रेंजर को काफी सेफ खेलना पड़ेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ग्रॉक काफी मिड लेन पे ही अभी भी अटके हुए हैं। अभी आई थिंक दिस इज द चांस टू गो, बट ओके यहाँ पर यू नो बड़ैंग ट्राई कर रहे थे वॉल के साथ, बट आई थिंक वो स्टैक्स उनका फुल नहीं हुआ। जी बिल्कुल, वो यहाँ पे जो है वो स्टैक फुल नहीं होने के कारण उधर जो थोड़ा सा दिक्कत आता हुआ दिखा, लेकिन चर्चल यहाँ पे स्पॉन हो चुका है। चर्चल के लिए टीम को यहाँ पे आना पड़ेगा, लेकिन उनके जंगलर अभी भी फार बिहाइंड है, तो क्या वो ये चर्चल ले पाएंगे? कोशिश रहने वाली है, कैनी मौजूदा रहेंगे। दूसरी साइड की बात की जाए, लाफो लाफो का अल्टीमेट आता हुआ दिखेगा, अटैक चार्ज एक बढ़िया सर्चअप, क्या वो कंप्लीट होता हुआ जाएगा? और कोशिश रहने वाली है, उसी के साथ अंदर की तरफ जाएंगे डैमेज देते हुए सेलेशियल टोन लाइट, बहुत ही बढ़िया किल यहाँ पे सिक्योर किया है, लेकिन वो क्या बच पाएंगे देखना पड़ेगा। और क्या ही जबरदस्त पारी यहाँ पे चली है, लेंसलॉट बच पाएंगे क्या? नहीं, इस बार मृत्यु को गले लगाना पड़ेगा, और सीधा धराशायी हुए वहां पे। बात की जाए स्कोर की तो 5-3 का जो स्कोर है वो अभी चलता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे हमारे लेंसलॉट धराशायी हो चुके हैं एकदम। डेथ कैम। ओ कोई बात ओ सेलेशियल, नहीं। और चलिए, खतरनाक। लापू लापू का आतंक इस समय छा चुका है बैटलफील्ड पे, अच्छा खासा उनको भी फार्म मिल चुका है। बात की जाए यहाँ पे टीम ने वापसी अच्छी कर ली है, जो उनको एक चाहिए था वो उनकी तरफ से हो चुका है। अब यहाँ पे दिक्कत यही आ रही है कि बर्स्ट ना होने के कारण ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। सीसी आपके पास जरूर रहने वाला है, दूसरी साइड पर रहेंगे लैंसलॉट, अंदर की तरफ आएंगे, पंजर का इस्तेमाल, और उसी के साथ शट डाउन किया जाएगा सालामांका, नहीं पालेमांका नहीं है, सॉरी माफी चाहूंगा। और उधर की साइड अगर बात की जाए तो वहां पे कोशिश अच्छी थी, लेकिन बचते हुए निकले मैच। और टीम जो है काफी ज्यादा मैं कहूंगा किल्स के लिए थोड़ा यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। ऑब्जेक्टिव थोड़े से कहीं ना कहीं पीछे की तरफ रहती है, और उभरती हुई टीम्स रहती हैं तो उनके बीच में ये अक्सर हमें देखने को मिलता है, थोड़े ऐसे जो क्लैशेस है वो ज्यादातर स्क्रीम्स के थ्रू हमें देखने को मिलते ही हैं। और टीम को यहाँ पे अब जो है वापसी विन कंडीशन यहाँ पे क्या रहने वाली है वो जरूर पूछना चाहेंगे। चलिए पीछे से पूछते हैं यहाँ पे, तो पीछे यहाँ पे क्या लगता है? पहले गोल्स की बात करें वो भी अच्छा खासा भी चल रही है, और टावर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मिड का टरेट जरूर यहाँ पे जाने वाला है, और वेलियन Yep. गूल अगर यहाँ पे मिड का टरेट निकाल लेते तो उनके साथ ही यहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़त उनको मिल जाएगी।
ट्रू, आई थिंक इजीली निकाल भी दे सकते हैं, बट जैसे ग्रॉक मिड लेन पे काफी ज्यादा घूम रहे हैं, तो थोड़ा बहुत चांस है। ओके, यहाँ पर क्या ये ट्राई किए बचने को, बट वो जो वॉल था इतना अटका दिया थी, वो हो गया। बट ओके, टॉप लेन पे भी एक डेथ क्या आ चुका है, 2 जन दाराशाही वेलिन गुल के हाथ में। फिर भी कियोशी अपने टर्टल पे, उन्हें भी पता है कि वहां पर कोई नहीं होगा कंटेस्ट करने को, क्योंकि वो उनके एनिमी पे एक वाईएसएस है। वाईएसएस जस्ट अभी उनको फार्म आउट फार्म करना पड़ेगा लाइट फॉर्म के साथ। फीलिक्स यहाँ पर लापू लापू मेक इज जस्ट मेकिंग श्योर ओह कि करेक्ट ना पाए, बट फीलिक्स वो बच नहीं पाएंगे ब्रॉडी से। एंड इसी के साथ ग्रॉक कुछ नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, खैर तो वो कुछ नहीं पा रहे हैं, कोशिश उनकी तरफ से पूरी आती हुई, टीम का सपोर्ट, लेकिन किधर रहने वाला है, मिड का टर्रेट जाता हुआ दिखेगा और उसी के साथ ये मिड की तरफ पे जो है एक वापसी यहाँ पे उनको मिल चुकी है। और यहाँ पे जो है मैप एक्सपेंशन अब हो चुका है, आपका जो जंगल एक्सपेंशन है वो हो चुका है। और टीम यहाँ पे वेलिन गुल को उनको मौका मिलेगा कि उनके जंगल पे रह के ही पूरी तरीके से यहाँ पे फार्म किया जाए। बात करेंगे यहाँ पे जो एमएम है यानी कि O2, वो यहाँ पे मौजूद है, फार्म कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो फार्म करेंगे उनका पर बेसिक अटैक बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला है। और यहाँ पे एक और बात की जाए रोटेशन की, तो रोटेशन आप चीज नोटिस करेंगे कि ज्यादा कुछ खास दिखा नहीं है। रोटेशन आप जैसे अब देखते हैं हम आगे ये जो टूर्नामेंट्स वगैरह रहते हैं, जो प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स रहते हैं आगे के मेन टूर्नामेंट रहते हैं ना कि स्क्रीन से, तो 3 मैन रोटेशन 4 मैन रोटेशन हमें आती हुई दिखती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी टीम की साइड से वो ज्यादा अभी आया नहीं है। एक सेटअप बनाने की कोशिश की जा रही है, ग्रॉग एक अच्छा अगर सेटअप यहाँ पे लगाते हुए दिखते हैं तो उनकी तरफ से टीम वाइप आउट होने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन उनको बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। आपके पास ग्रेंजर है, ग्रेंजर आप ज्यादा से ज्यादा पोक कर सकता है, लेकिन वो फिनिश ऑफ नहीं कर सकता अनलेस कि यहाँ पे अपने जो है हीरोज के अल्टीमेट वगैरह या यूटिलिटीज हैं वो वेस्ट करवा दिए हैं। उसके साथ साथ वहां पे अगर उनको एक अच्छा ओपनिंग मिल जाता है तो वहां से वापसी हो सकती है। और सी यहाँ पे लूनॉक्स सेम वही चीज रहने वाला है, अगर लूनॉक्स को भी अच्छे खासे यहाँ पे स्टैक मिल जाते हैं, अगर उन्होंने स्काई पेसर यहाँ पे बना लिया उसके साथ भी उनको एक अच्छी सी ओपनिंग मिल जाती है, तो दिक्कत नहीं होती हुई दिखेगी। क्योंकि दिक्कत तो यहाँ पे होने वाली है, इतने ज्यादा रेंज के दूर होने के बावजूद कैनी मौत को गले लगाते हुए, और जिस तरीके से O2 ने उनको यहाँ पे ऑक्सीजन प्रदान किया, भाई क्या ही बोलूं मैं, बहुत ही ज्यादा दूर रेंज पे थे, लगा नहीं था कि यहाँ तक जा पाएगा वो रेंज, लेकिन वो बहुत बेहतरीन तरीके से अल्टीमेट लगाई। जरूर पंचर का इस्तेमाल करेंगे, लैंसलॉट अंदर की तरफ, मेज दिक्कत में हो सकते हैं, ब्रिलियंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और पीछे की तरफ आएंगे और ये लैंसलॉट जिगजैग करते हुए जा रहे हैं। और अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पे स्किल्स का, लेकिन दूसरी साइड वो भी तैयार रहने वाली है, एक बढ़िया अल्टीमेट आएगा, बढ़िया सेटअप बदांग की तरफ से, लेकिन फॉलो अप में कमी, जिसके कारण यहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप दिखा। लेकिन लैंसलॉट वो उस कम्युनिकेशन गैप को फिल आउट करते हुए बैक लेन को डिस्ट्रॉय करेंगे और उसी के साथ लापू लापू बहुत ही बढ़िया तरीके से डैमेज देते हुए आएंगे। गलत मूव यहाँ पे साबित हो सकता है, पीछे रखना पड़ेगा। आप वो भी अंदर की तरफ जा चुके हैं, बहुत ज्यादा चार्ज ले चुके हैं, और यही मैं बात कर रहा था कि आपके पास बैकअप फॉलो नहीं है और वहां पे दिक्कत आएगी जी बिल्कुल। और उसी के साथ देखिए ये दिक्कत रही, फैंटम एग्जीक्यूशन इस्तेमाल किया जाएगा वैसेस के ऊपर, बचते हुए नहीं गए थर्न रोजेस का इस्तेमाल, और रेड बफ की तरफ अगर थोड़ा सा जो है पोक करने का प्रयास किया जा रहा है, अभी भी वॉल लगाते हुए दिखे हैं। ग्रॉक के ऊपर प्रहार किया जाएगा, उनको लगातार स्टन किया जाएगा, स्लो डाउन किया जाएगा, उसी के साथ पीछे हटे हैं और लॉर्ड का आगमन हो चुका है। और लेकिन वो टरेट, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा, लैंसलॉट अंदर डबल किल, और उसी के साथ ताराशाही हुए, ट्रिपल किल मिल सकता था, लेकिन संतुष्ट होंगे वो डबल किल लेने में। बढ़िया उनके पास मौका, 2 किल अगर और मिल सकते थे, अगर जरी सी हेल्थ रहती उनके पास, तो काबिले तारीफ गेम प्ले, काबिले तारीफ यहाँ पे डिफेंस भी जो टीम्स है उनकी तरफ से भी। लेकिन लॉर्ड, उसका आगमन हो चुका है, लॉर्ड स्टार्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा और ये लॉर्ड के साथ टीम विलियन गोल्स मैच को एंड करने के लिए कोशिश करती हुई दिख सकती है। काफी जल्दी एंड करना चाहती है टीम वेलिंग गोल्स, क्योंकि उन्हें भी पता चल रहा है कि कैनी जो है ऑलमोस्ट 8 मिनट पे यहाँ पर मरे। उनका पहला डेथ 8 मिनट में था, तो वाईएसएस काफी अच्छा कर रहे, बट उनको अभी थोड़ा टीम की मदद चाहिए होगी, एंड उसके वजह से वो परफॉर्म कर सकते हैं। कियोशी जो है उन्हें दिख गया है कि वाईएसएस थोड़े बहुत अकेले हैं, तो लेना चाहते हैं वो ही चीज के एडवांटेज, बट क्लियरली जल्दी जल्दी क्लियर करके टरेट्स अपने हाथ पे। नाउ वेलिंग गुल के पास एक चांस है कि एक इनहिबिटर अपने हाथ करके मे बी 1 या 2 किल ले, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं ग्रेंजर और लूनॉक्स काफी इजी टारगेट बन रहे हैं, बट
बट यहाँ पर सेलेस्टियल ट्वाइलाइट ट्राई कर रहे हैं एक सेटअप देने को, बट नहीं। कोशिश रहेगी जरूर, उसके साथ अंदर की तरफ जाएंगे, ब्रेन्स का इस्तेमाल करते हुए वो अच्छा सेटअप आता हुआ दिख सकता है। दूसरी साइड पे रहेंगे लापू लापू, बढ़िया उनकी तरफ से कोशिश रहेगी टेक्टोनिक चार्ज का इस्तेमाल, लैंसलॉट बचते हुए निकलेंगे पीछे, फोबियस अंदर काफी ज्यादा घुस चुके हैं और यहाँ पे भारी डैमेज ले लिया है टीम वेलिंग्स गोल्स, उनको पीछे हटना पड़ेगा। बढ़िया डिफेंड यहाँ पे टीम न्योर की तरफ से, और दरअसल मैं इनको न्योर ही बोलूंगा क्योंकि पूरा नाम लेने में दर्शकों को मेरे को दिक्कत थोड़ी सी हो रही है अभी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे बात की जाए, जिस तरीके से गेम प्ले की बात की जाए, आप यहाँ पे चल रहे हैं जरूर, लेंसलॉट बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। अगर ये पहले का बफ लेंसलॉट होता ना पीछे, ये गेम थोड़ा और रोमांचक हो सकता था। लाइक बीच में जब मैच आया था लेंसलॉट का, अरे भैया क्या मजे आए थे उस समय यार, हम लोगों ने क्या ही मतलब लेंसलॉट चलाया था। अरे बाप रे, आई थिंक तभी भी वो काफी फेमस थे, बहुत मेटा पे थे, लाइक हर एक रैंक गेम्स में भी मुझे भी याद है कि लैंसलॉट फर्स्ट पिक होता था, जैसे अभी रैंक में गुशन का है। बट आई थिंक यहाँ पर कियोशी कुछ ट्राई करना चाहते हैं विद द लैंसलॉट एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल विद दैट। जी बिल्कुल, अरे लेंसलॉट इनके लेंसलॉट के साथ मैंने खेला है काफी टाइम। आई मीन अभी रिसेंटली हम जो है यहाँ पे खेल रहे थे रैंक गेम्स, और खेलते बहुत अच्छे हाइपर, हमने देखा है जो क्लिप्स वगैरह इनकी भी काफी अच्छी तरीके से चलती है। पिछले स्क्रीम्स में भी यहाँ पे खेल रहे थे, जॉय से आगमन किया था, इनका डेब्यू हुआ था यहाँ पे जो एल्गामो ई स्पोर्ट्स पे, जॉय के साथ यहाँ पे करते हुए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आतंक अभी भी मचाए हुए लगातार, वो बुली करते हुए जा रहे हैं यहाँ पे, पंचर लगाते हुए जाते हुए, और उसी के साथ टेक्टोनिक चार्ज आएगा, दिक्कत होगा। और उसी के साथ अपने जो बदांग भैया है वो दाराशाही हो गए, सारा अल्टीमेट अपने ऊपर सोक किया, और खुद यहाँ पे जो है सेक्रीफाइस हो जाएंगे टीम के लिए। लेकिन तो दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि लॉर्ड 20 सेकंड में आने वाला, और टीम को यहाँ पे ये लॉर्ड किसी भी तरीके से लेना पड़ेगा। अगर लॉर्ड नहीं ले पाएंगे तो इस लॉर्ड के साथ आपके जो इन्वेडेड टरेट है वो टूट जाएंगे। और साथ के साथ यहाँ पे भी बात कर ले फार्म गैप की, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है लगातार। डेफिनेटली फार्म गैप बढ़ रहा है, तो अभी यहाँ पर वाइसेस को स्टेप अप करना पड़ेगा, प्लस उनकी टीम को, क्योंकि फीलिक्स जो है एज अ मेज यूर अ सेट मेकर, एज इन यू आर द वन हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल द मैप, बट फीलिक्स के हाथ से वो हो नहीं पा रही है। एंड दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन वाई रेड साइड थोड़ा बहुत दिक्कत दे रही है। बट यहाँ पर ट्वाइलाइट जो है देखिए, लेकर का इस्तेमाल करते हुए बचना पड़ेगा, पीछे से तरफ आएंगे और उसी के साथ बेसिंग फाइट का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे, लेकिन टोन रोज पीछे से आएगा, लैंसलॉट डबल किल लेते हुए जाएंगे, और उसी के साथ एक बढ़िया टीम फाइट, 4 बंदे धराशायी हो चुके हैं, ये वाले अकेले कैनी बचे हैं। क्या वो कैनी बच पाएंगे किसी भी तरीके से? इस ब्रह्मास्त्र को रोक पाएंगे क्या वो? ये मिनियंस की टोली को रोकने के लिए तैयार अकेले खड़े हैं, कोशिश करना चाहते हैं, डैमेज देते हुए जाएंगे, लेकिन लैंसलॉट पंचर का इस्तेमाल करते हुए सारे मिनियंस के ऊपर मार्क लगा चुके हैं। इस समय कोशिश रहेगी, और उसी के साथ फैंटम एग्जीक्यूशन टोन रोजेस का इस्तेमाल करते हुए शट डाउन किया जाएगा, और मिनियंस बेस की तरफ, और बेस बिना मिनियंस के ये खत्म कर दिया गया है। और उसी के साथ ये जो विक्ट्री है पहले मैच की, वो यहाँ पे जीतती हुई गई है टीम वेलियन गोल के नाम पे। बेहतरीन गेम प्ले, बेहतरीन एग्जीक्यूशन, पहला पिक किया था लेंस, आपके पास चांस था काउंटर करने का, लेंस को आप ऊपर उठा सकते थे, काफी सारे हीरोज आपके पास ओपन थे, बट स्टिल यहाँ पे भाई ऐसे वाले खिलाड़ी के सामने मैं तो कहूंगा सीधा लेंस बैन कर दो भैया, लेंस और दो हीरो बैन कर दो। सुयु तो बनता है, ये वाले मेटा पे काफी खतरनाक हीरो है, एंड इजीली मैच कैरी करने का काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तो बैन होना ही चाहिए। एंड इसी की वजह से हमने अगर ड्राफ्ट, अगर तुम लोग को याद है तो हमने देखा था कि काजा बैन किया था। वो एक एक बात था कि वो लोग थोड़ा बहुत टैंक, एक फाइटर टैंक ट्राई करना चाहते थे, एंड ऐसा नहीं चाहिए था कि फाइटर टैंक ही उन्हें एज एन वेरी गुड हीरो सच एज काजा उन्हें काउंटर करे। हम्म, जी बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूशन आता हुआ दिखा, ये देखिए यहाँ पे एमवीपी जरूर बनते हुए गए हैं, अपने ग्रॉक 4 रहने वाले। अब सब की जाए यहाँ पे लूनॉक्स वो पिक अच्छा था, लेकिन वो काम ज्यादा आ नहीं पाया क्योंकि आप एक बार बच सकते हैं ब्रिलियंस मार के, दोबारा नहीं बच पाएंगे लेंस। और यहाँ पे बात की जाए लेंसलॉट, उनकी तरफ से उमदा गेम प्ले आता हुआ दिखा। फूबियस की बात की जाए, वो भी ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से ही खेले थे यहाँ पे। उनका जो काम था भैया कि बैकलेन को जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, उसके साथ साथ जो डैमेज है, जो यूटिलिटी है वो यूज करवानी है आपको। और लैंसलॉट तो थे ही पीछे से कैरी करने के लिए, मेज ने की भी यहाँ पे काफी
अच्छी खासी तारीफ करना चाहूंगा, उनका भी बहुत बढ़िया यहाँ पे डिसंगेज उनकी तरफ से रहा। हर समय कुछ ना कुछ मैप पे हो ही रहा था। तो बहुत ही बढ़िया गेम प्ले, पहला मैच जो है यहाँ पे अपने नाम कर चुकी है टीम वेलिएंट गोल। और उसी के साथ इस मैच को जीतते हुए, जो पहला मैच है वो जीतते हुए, विक्ट्री का आगमन, जो डंका है वो जरूर बजा चुकी है टीम अपनी जो है वेलिएंट गोल्स। लेकिन आगे और भी मैचेस रहने वाले हैं। आई थिंक ये बेस्ट ऑफ 1 है पीजी, या बेस्ट ऑफ 3 है? बेस्ट ऑफ 3 तो वापस से ये टीम ओ, खेलेगी, एंड अगर वेलियंट गुल नेक्स्ट वाली मैच जीत जाती है तो हमें हमारा विनर मिल जाएगा। वो चलिए, बेस्ट ऑफ 3 की आपने बात करी यहाँ पे, और बेस्ट ऑफ 3 यहाँ पे मजा आता है। बेस्ट ऑफ 3 पे पहला मैच जब भी जाता है हम बोलते हैं कि थोड़ा टेस्टिंग वगैरह रहता है मैचेस में, कि पहला मैच थोड़ा सा बेट आउट वाला रहता है। और स्क्रीम्स का देखिए मेन पॉइंट ये रहता है, जीतना हारना देखिए लगा रहता है स्क्रीम्स में। अगर आप हारते हो तब भी आप जीतते हो, अगर आप जीतते हो तब भी आप जीतते हो। इवन अगर आप गलतियां करते हो तो तब भी आप सीखते हो। स्क्रीम्स का मतलब ही यही है कि गलतियां करना और उन गलतियों से सीखना, ताकि आप वो सेम मिस्टेक अगली बार कभी अगर आप ऑफिशियल टूर्नामेंट्स वगैरह खेल रहे हो तो वहां पे ना दोहराए, वहां से आप स्ट्रांग बन पाए। और उसके लिए स्ट्रांग करने के लिए आपको ये स्टेप लेना बहुत जरूरी रहता है। तो टीम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी के साथ अब बात करेंगे यहाँ पे मेटा की। मेटा अभी रिसेंटली मेटा काफी अच्छी तरीके से, जिस तरीके से चल रहा है, हम देखा थोड़ा सस्टेन मेटा की तरफ ज्यादा जा रहा है। और अर्ली गेम पे जो हीरोज हैं थोड़े से हाई हाई पेस हीरो लिए जा रहे हैं, जो फार्म में थोड़ा जल्दी जो है फार्म कर पाए। जैसे कि सीओ हो गए, आपके हार्लिया हो गए। तो ये मैच हमें देखने को मिल रहे हैं। यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी भी काफी अच्छी तरीके से चल रहा है यहाँ पे। गुनीवर पिक हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग पिक गॉड। गॉड से भी काफी ज्यादा मजा आता है खेलने में दोस्तों, जब भी हम खेलते हैं। और गुशन भैया काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ रैंक में, मतलब 10 में से 9 गेम तो वो बैन ही होते हैं भाई। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे आई थिंक रैंक में बहुत पॉपुलर है, एंड मैंने भी देखा है दोनों साइड में बैन होती है। लाइक 50% ऑफ माय रैंक गेम्स मैंने देखा है कि ऐसा भी नहीं है कि मेरी टीम बैन करी, मेरी ओपोनेंट्स भी बैन करके निकल जाती है, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। बट यहाँ पर टीम्स क्यों नहीं खेलती है, मेरे को वो नहीं, वो थोड़ा देखना है मेरे को कि क्यों टीम्स नहीं उठाती है। हम्म, जी बिल्कुल। लेंस दिक्कत भी है ना कि आप मिड लेन पे ट्रेड ऑफ कर रहे हो घूशन, ओके आपने घूशन उठा लिया बाय चांस, मान लेते हैं आप घूशन उठा के आप एग्जीक्यूट कर दोगे, बट यू विल सैक्रिफाइस लॉट ऑफ क्राउड कंट्रोल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेम के अंदर। अगर एज अ मेज प्लेयर मिड लेनर, वो रहता ही इसलिए कि आप सीसी यहाँ पे दे पाए। मेज का काम ही नहीं है कि वो क्राउड कंट्रोल, वो बर्स्ट डैमेज, वो प्रेशर जो है एक तरीके से वो बने रहना चाहिए। गुशन के साथ ये है कि आप जरूर मार्क कर सकते हैं, अनलेस अगर आप फार्म हो जाए। अगर वो फार्म नहीं हो पाता है गुशन किसी भी तरीके से, उसको अर्ली गेम पे रोक दिया जाता है, देन लेट गेम में वो ऑलरेडी यहाँ पे यूजलेस हो जाता है, क्योंकि एक अथीरा अगर आप डाल लोगे तो गुशन यहाँ पे काउंटर हो जाता है इजिली। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है पॉइंट्स वो आते हुए दिखते हैं। लेकिन पॉइंट्स पॉइंट्स यहाँ पे नहीं रहने वाले, क्योंकि ये मैच पॉइंट रहने वाला है टीम ने, और के लिए उनके पास आखिरी मौका रहेगा। अगर इस मैच को वो किसी तरीके से जीत जाते हैं तो अंत तालिका हो जाएगी 1-1 की। उसके बाद हमें बेस्ट ऑफ 3 का थर्ड मैच करना पड़ेगा, और जो उस मैच को जीतेगा वो बन जाएगा इस पूरी BO3 सीरीज का विजेता। उससे पहले लेकिन जो टीम है यहाँ पे थोड़ी विमर्श करती हुई जाएगी, ड्राफ्टिंग फेज की तरफ कुछ ही देर में जाने वाले हैं पीछे। और आई थिंक मेरे को जहां तक लगता है कि लैंसलॉट यहाँ पे बैन होने वाला है। ओह, 100%। Lancelot, Suyu, and I think यहाँ पर अगर दी रेड साइड जो टीम नोआरेटा जो है, वो अगर उन्हें पता है कि कियोशी खेलते हैं जॉय जैसा हीरो, तो डेफिनेटली बैन करना चाहिए। तो मुझे देखते हैं क्या करेंगे। बट एक बात बनी रहेगी कि टीम नोआरेटा को जो मिड लेन है, स्पेशली फॉर फीलिक्स, उन्हें ऐसा हीरो लेना पड़ेगा, थोड़ा एओई चाहिए, एंड उन्हें थोड़ा बहुत मैप कंट्रोल करना पड़ेगा। अर्ली गेम पोक करने के लिए काफी अच्छे हैं, बट जैसे ही रोटेशन चालू हो जाते हैं वो खुद पहले पिक ऑफ हो जाते हैं। एंड ऐसा भी देखा, हमने बहुत सारा मोमेंट्स देखा है कि लैंसलॉट और इवन ब्रॉडी ब्रॉडी जैसा हीरो बैक लेन आके मार रहे, तो बहुत दिक्कत हो रही है टीम के फ्रंट लेन्स को, स्पेशली लापू लापू और द ग्रॉक। तो लास्ट गेम देखा कि हमने जैसे कि ग्रॉक निकाला गया है, उन्होंने उन्होंने ये एमवीपी निकाला है अपने आप के लिए, बट मेरे को जंगलर देखना है।
और उनके टीम का जंगलर क्यों नहीं निकाल सकते? है पोटेंशियल तो है टीम पे, बट काम करना पड़ेगा उनको। जी बिल्कुल, और दर्शकों को बता दूं कि ये स्क्रिम चल रही है दर्शकों, और टूर्नामेंट भी जो होते हैं हमारे वो ज्यादा फ्री होते हैं। लाइक अलगामो की तरफ से अभी जितने भी टूर्नामेंट, अभी तो एक ही गया था और जो ऑफिशियली गया था यहाँ पे बैटल फॉर द क्राउन, वो भी यहाँ पे फ्री गया था। एंट्री फीस कुछ नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे सोशल हैंडल फॉलो करना है, आपको डिस्कॉर्ड जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, सर्वर को। सर्वर आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पे अपनी टीम जो है रजिस्टर कर सकते हैं, फिर चाहे वो स्क्रीम्स के लिए हो चाहे वो टूर्नामेंट के लिए हो, आपको वहाँ पे सारे टैब मिल जाएंगे। सोशल मीडिया आप जो है वहाँ पे फॉलो कर लो, जितने भी सोशल हैंडल्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम आप फॉलो कर लो, या व्हाट्सएप जो ग्रुप्स है वहाँ पे जो है ज्वाइन कर लो, कि टूर्नामेंट से रिलेटेड और स्क्रीम से रिलेटेड जितने भी अपडेट है ये सारे आपको सोशल मीडिया पे जो है अपलोडेड मिल जाएंगे एंड टू एंड, और आगे की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो आपको पहले से ही पता मिल जाएगी। तो बेटर रहता है दोस्तों, फटाफट से फॉलो करो, ज्वाइन करो, और स्ट्रीम को जो है शेयर करो, लाइक करो दोस्तों फटाफट से, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे, एक लाइक आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे एक जो डिफरेंस है वो क्रिएट करता है। और हम सभी को लाइक ऐसे जो ऑर्ग्स है उनकी जरूरत है, जो सच में यहाँ पे अंडरग्राउंड के लिए सोच रही है, और एक फेयर तरीके से मैं कहूंगा, विदाउट एनी पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। ऐसी जो है ऑर्ग्स को आपकी जरूरत रहती है, एक सपोर्ट की जरूरत रहती है। तो आइए, हाथ बटाइए और The immortal one इंजॉय chose करिए me इस to मैच को। vanquish the और इसी के साथ shadows that चलते हैं यहाँ पे plague मैच this की तरफ। world. बात करने वाले थे टीम वेलियंट गोल इस बार खेलेंगी रेड साइड से, ब्लू साइड रहने वाले है टीम न्यू। और इसी के साथ बात की जाए बैंस की, तो पहला बैंस सुयू यहाँ पे सीधा उड़ा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा मौका सुयू को खेलने का। हो ये दोनों की दोनों टीम इंटरेस्टिंग बना Different रही है दोनों perspectives के expose the बैन same सेक्शन truth. में। तो अभी सुयू 2, बैन हो चुका है, तो 1. यहाँ पर लियो मोड का भी काफी ज्यादा चांस है, तो मे बी यहाँ पर टीम नोरेटा बैन करेगी। बट वेलियंट बुल्स, अभी उनके हाथ पे आता है कि वो जोशिन बैन करे या नहीं। अभी थोड़ा बहुत Valor and देखा है कि royalty in a dead body. यू नो फीलिक्स जो है कंफर्ट हीरोज पे खेल रहे, तो मे बी यहाँ पर जोशन ओपन रखना सेफ चॉइस हो सकता है। बट सिंस नोएरेटा के हाथ पे फर्स्ट पिक है, तो वो बहुत बड़ा गैम्बल हो जाएगा। तो मे बी यहाँ पर वो बैन हमें देखने मिलेगा। Butterfly is born by thy wish, हम्म, guided by lantern's light. लेट्स सी। और इसी के साथ लियो मॉच बैन Everything वो जरूर रहने engulfed वाला in है, और flames. एक सिर्फ बैन आप बोल सकते हैं। और चलिए यहाँ पे इमेज के तौर पे वलीर बैन करती हुई दिखेगी, पिछले टाइम पे बहुत ज्यादा सीसी दे के लीडर्स को दिक्कत दी थी, तो इस बार वो मौका नहीं देना चाहते हैं। दूसरी साइड बात की जाए यहाँ पे जोशिन, अच्छा खासा बैन, मार्शल अगेन यहाँ पे जो है वो बैन आता हुआ दिख रहा है। और उसी के साथ आप चलेंगे तीसरे बैन की तरफ, उनकी नजरें रहने वाली I've है। been waiting for और too वो long. बैन यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, कैरी बैन आता हुआ दिखा है टीम वेलियन गोल की तरफ से। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़े से हमें जो काफी सारे फ्रंट लाइनर देखने को मिलने वाले हैं। बात की जाए आप कौन सा हीरो उठाना चाहेंगे, कि ऑप्शन बहुत सारे आपके, और ग्लू यहाँ पे ओपन है, तो ग्लू का आगमन हो सकता है फर्स्ट पिक पे, देखना पड़ेगा। या हार्ले, बहुत सारे ऑप्शन आपके खुले हुए हैं, तो आप यप। यहाँ पे I खेलना am a चाहेंगे। daughter of Northern Vale. I swear to ओके, protect it till my last इंटरेस्टिंगली breath. इट इज अ फ्रेया। ओके, फ्रेया यहाँ पर गोल्ड लेन पे जाने का काफी कम चांसेस है। पता नहीं क्यों वलीर बैन यहाँ पर था, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि वलीर काफी दिक्कत दे रही थी। बट जैसे टीम कॉम्पोजिशन अभी हम देखने वाले हैं, तो मे भी यहाँ I पर am not फ्रेडरिन the जैसा only हीरो देखने one मिलेगा या bound by समथिंग these टैंकी। तो chains. बेस्ट बेटर है कि हमने वलीर बैन कर दिया। बट वेलियंट गोल्स वापस से जाती है The southern फोवियस seas के are हाथ पे। my अब फोवियस वर्सेस domain. फ्रेया अगर हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर दोनों को दोनों मिनियंस क्लियर करो, टरेट पुश करो, देखो कि कौन सा लेन ओपन है, कहाँ पर टीम फाइट हो रही है, एंड ऐसा ही हमें गेम प्ले देखने मिलेगा। बट वेलेन गोल्स थोड़ा चटपटे पिक्स के साथ आते हुए यहाँ पर कडिता, बहुत दिन तक मैंने नहीं देखा है ये वाला पिक। जी बिल्कुल, कडिता देखिए भाई, मेरे को पसंद नहीं है, मैं जब भी जंगल खेलता हूँ तो कडिता एक ऐसा हीरो है। मैं मेरे साथ क्या होता है ना, मैं जब भी गुशन उठाता हूँ सामने कडिता आ जाती है, पता नहीं क्यों, I भगवान am the बोलते हैं priestess of कि primal lightning, इसको शांति the से खेलने देना hunter ही of नहीं है। all the evil अरे gods. रे, और कडिता को मारना गुशन से भैया बहुत दिमाग खराब हो जाता है। उसका पैसिव जो है वो बहुत ज्यादा रॉय रहता है, जिसके कारण वो जो उनकी जो हेल्थ है शील्ड मिल जाती है, उसके साथ साथ जो हील है उनका बहुत जबरदस्त आ जाता है, और वो मरते मरते हील होके बच के निकल जाती है। दूसरी साइड की बात की जाए यहाँ पे,
मौके का फायदा उठाया, तो जो कैरी बैन कर रही थी उस मौके का फायदा उठाते हुए ये काफी चालाकी से टीम ने, और मैं कहूंगा मैं कंपोजिशन बहुत अच्छा बनाया है। आपने यहाँ पे एडिट उठा लिया है जो एक तरीके से एमएम का भी काम करेगा, डैमेज डीलर के साथ साथ आपने टैंक भी मिल लिया है, आपको एक फ्रंट लेनर मिल गया अच्छा खासा। और चलिए यहाँ पे टीम वेलेंट गोल की तरफ से ये बढ़िया रहा कि आपने हाईलाउस उठा लिया। हाईलाउस यहाँ पे क्यों उठाया, क्यों आप स्लो डाउन करना चाहते हैं बेसिक अटैक को, यानी कि आप इरेथिल को भी अगर उनके पैसिव के थ्रू पकड़ते हैं हाईलाउस के, स्लो डाउन मिलेगा। दूसरा डाउन आपका जो बेसिक अटैक है वो स्पीड कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ अपनी टीम को आप यहाँ पे जो है मूवमेंट बूस्ट भी दे सकते हैं। वो हमने देखा है ग्लोरियस पाथवे के थ्रू, तो वो आता हुआ दिख सकता है हमको। तो ओवरऑल बात की जाए टीम वेरिएंट गोल की तरफ से, उनके पास बहुत अच्छा खासा मौका है, उनके पास बहुत सारे हीरोज, उनके कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छे हैं, और टीम नोवार उनके पास भी कॉम्पोजिशन अच्छा है, बट उनको एक ऐसा मैच चाहिए जो ये इन तीनों का कॉम्पोजिशन जो है इन तीनों को किसी भी तरीके से काउंटर कर सके। तो मे भी शायद आप जाना चाहो लुओ, लुओ अगर आता है तो एक अच्छा कंपोजिशन हमें बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि लुओ से आप जो है डाइवर्जन प्ले कर सकते हैं, और डाइवर्जन प्ले करके ना आप बहुत सारे जगह पे मैं कह सकता हूँ कि अपने लिए एक प्लस पॉइंट बना सकते हैं। तो लियो अगर आता है तो वो भी बढ़िया रहेगा, अगर लियो लो नहीं आता है तो मे भी शायद लिलिया की तरफ जाना चाहें। लिलिया से जो है अच्छा खासा वो स्लो डाउन, वो डैमेज जो है वो बहुत ज्यादा रह जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पे जो टीम नोर है वो किसकी तरफ जाना चाहती है। सी फारसा भी एक अच्छा पिक हो सकता है, बट थोड़ा सा रिस्की पिक मैं बोलूंगी। बहुत पोजिशनिंग चाहिए होगा, बट जैसे हमने देखा है कि लास्ट गेम ओ पे बहुत उनका पोजिशनिंग अच्छा नहीं था, तो थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। बट है वेलेंट गुल्स काफी स्ट्रॉन्ग पिक्स लेके आ रहे हैं, अभी फैन ही ट्राई करना चाहते हैं। आई थिंक दे दिस इज लाइक वेरी फ्यू टीम्स हु नो स्क्रिम्स का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए नए नए हीरोज प्रैक्टिस करने को हमें दिख रही है। एग्जैक्टली exactly. और यही मौका रहता है आपके पास कि आप जो न्यू हीरोज है, न्यू कॉम्प है, उनको टेस्ट कर सके, उनकी कमजोरियां पता कर सके और उसके ऊपर वर्क करके उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाए। लेकिन यहाँ पे पासा थोड़ा सा चेंज हो रहा है मेरे दोस्त, अब बोला है सामने की लैंसलॉट, अब हम खेल के दिखाएंगे यहाँ पे भैया। आप पिछले गेम में थे कि योशी जो खेल रहे थे, जो गॉड बने थे यहाँ पे लैंसलॉट से, लेकिन अब हमारी बारी, हम दिखाते हैं कि लैंसलॉट खेलते कैसे हैं। और चलिए यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लैंसलॉट को खेला जाएगा, लेकिन है नहीं भैया, फैनी बड़ा दिक्कत देने वाली है। अगर वो आई अंदर की तरफ यहाँ पे कट थ्रोट लगाते हुए दिखेगी तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अनलेस यहाँ पे एडिट किसी तरीके से अगर फैनी को पकड़ लेती हैं तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। अनलेस फैनी यहाँ पे अच्छा खासा उनके पास मौका है, मोबिलिटी है उनके पास, डैमेज है, अर्ली गेम पोटेंशियल उनके पास रहने वाला है। तो केवल का जो है यहाँ पे कमाल वो हमें देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ जो टीम फाइट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि आप लूनॉक्स की तरफ चले गए हैं, लेकिन आपकी तरफ से सीसी बहुत कम है। आपके पास सीसी के लिए सिर्फ यहाँ पे एडिट है, और एडिट के पास भी ज्यादा सीसी नहीं होता है, उसके पास रेंज नहीं है उसके जो है टैंक फॉर्म में। तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी दोस्त, और फैनी यहाँ पे उनके पास फ्री हैंड रहने वाला है। तो लेट्स सी किस तरीके से जो है ओवरऑल यहाँ पे जो फाइट्स है वो हमें आती हुई दिख सकती है। लेकिन तीची, आपसे पहले सवाल यहाँ पे कि फर्स्ट ब्लड कौन लेके जाएगा। हाई चांस पानी के हाथ पे है। जैसे लेवल 2 हो गया है, यहाँ पर मिड लेन पे कुछ चल रहा है, एंड फैनी जब से आ जाते हैं तो हमें फर्स्ट ब्लड डेफिनेटली देखने मिलेगा। तो यहाँ पर फीलिक्स को काफी सेफ खेलना पड़ेगा, कर्डिता को डेफिनेटली ज्यादा पोक करना पड़ेगा, एंड इसी के साथ चलते हैं लैंड ऑफ डॉन की तरफ। टीम्स तो काफी एक्सपीरियंस्ड है, सब लेवल 5 के ऊपर है। जी बिल्कुल, और उसी के साथ यहाँ पे अपने जो लैंसलॉट है वो मौजूदा रहेंगे, यानी कि कैनी। कैनी, अरे एक गेम हुआ करता था लाइक उसका नाम था द वॉकिंग डेड, वो लाइक मोबाइल पे खेला था मैंने पहले। उसमें कैरेक्टर था कैनी, वो कैरेक्टर बड़ा मस्त था, और लाइक वो गेम भी काफी ज्यादा मस्त था वाला गेम। लेकिन अभी बात करेंगे इस गेम की, क्योंकि ये पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे वेरिएंट गोल के पास है। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे उनके पास जाता है तो वो इस मैच को यहाँ पे जीतते हुए जाएंगे। और अर्ली गेम की बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर कहीं ना कहीं वो जरूर नजर आता हुआ दिख रहा है पूरी तरीके से। आप एक बार नोटिस करेंगे कि यहाँ पे बचाया जा रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे एमएम को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। जेन, उनको पीछे हटना पड़ेगा, और इस समय जो टीम का रोटेशन है वो भी बेहतरीन तरीके से आता हुआ दिख रहा है। टॉप लेन की तरफ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और फ्रेया मौके का फायदा उठाते जितना हो सके अर्ली गेम में प्रेशर वो मेंटेन बनाते हुए जा रही है।
बेट्रिस को बहुत ज्यादा संभल के खेलने की जरूरत है। चलिए पीछे से मेज का सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, बढ़िया स्टन लगाते हुए दिखेंगे। इधर के साइड फैनी डैमेज दिया जरूर फिलिक्स को, लेकिन फिलिक्स बचते हुए निकलेंगे पीछे की तरफ। और अभी लेवल 4 होने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ देर में चर्चल आने वाला है। उससे पहले बॉटम लेन की तरफ दिक्कत हो सकती है, देखना पड़ेगा। ओबियस मौजूदा सेकंड्स का इस्तेमाल किया और उसी के साथ थोड़ा सा डैमेज देते हुए दिखेंगे। दिक्कत में पड़ सकते हैं, थोन रोजेस का इस्तेमाल किया जाएगा। लैंसलॉट इस्तेमाल किया है फर्स्ट किल और उसके साथ बचते हुए निकले। दूसरी साइड की बात करें तो दिक्कत हो सकती है, टॉपलेन की तरफ अंदर की तरफ गए थे, काफी ज्यादा डैमेज हमें देखने को मिला, लेकिन वो सरवाइव करके निकल जाएंगे। और ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि 4 बंदों के बीच में से अगर आप सरवाइव करके निकल जा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात मालूम पड़ती हुई जाती है। और दूसरी साइड की बात करें यहाँ पे चर्चल वो मिस कर दिया जाएगा, क्या नहीं इस समय वो चर्चल यहाँ पे सिक्योर कर दिया है आपने। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फैनी को ब्लू बफ लेना पड़ेगा और यही दिक्कत होता है जब आप एक बफ डिफेंडेड हाइपर के साथ जाते हो। आपको बफ का जो है जरूरत हमेशा पड़ता है किसी भी बड़ी फाइट से पहले। डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारा नर्व्स मिला है ये वाले हीरो को विद द लिंक ऑल्सो। आई थिंक हाई टाइम आ चुका है अभी ऐसे एनर्जी वाले हीरोज थोड़ा बहुत बफ हो जाए, थोड़ा बहुत वापस से मेटा में भी आ जाए। बट देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। यूरेनस वर्सेस फोवियस यहाँ पर लाइक थोड़ा बहुत ऑब्वियस हो रहा है कि दोनों के दोनों बस टीम्स क्लियर कर रही है एंड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। एक सरप्राइजिंग सी बात है कि अभी तक फर्स्ट ब्लड नहीं हुआ है डिस्पाइट टीम्स रीचिंग ऑलमोस्ट लेवल 6। यहाँ पर देखिए मे बी ये फर्स्ट ब्लड होगा। कोशिश रहने वाली है, अल्टीमेट आएगा जरूर, वो बेसिक अटैक रेंज का फायदा। और चलिए फर्स्ट ब्लड आता हुआ खाते में जाएगा एडिट के। टॉप लेन की बात करें तो रोटेशन ऑलरेडी आ चुका है टॉप लेन की तरफ, दिक्कत हो सकती है। मेज बड़ी अल्टीमेट आएगा उनकी तरफ से और यहाँ पे बचते हुए निकलेगी उनकी तरफ से, रिटेशन आता हुआ दिखेगा। फ्रेया की तरफ से रोकने का प्रयास किया जाएगा, ग्लोरियस पाथवे इस्तेमाल हो चुका है ऑलरेडी। पीछे से यहाँ पे आएंगे, जैन बचते हुए निकलेंगे, तानाशाही कर दिया 4 बंदों के बीच में और उनको अब संभाल के खेलना पड़ेगा। टॉप लेन लेने का प्रयास कर सकते हैं, कोशिश रहेगी जरूर, लेकिन वहां पे अपने जो टैंक है यानी कि यूरेनस वो आ चुके हैं अल्टीमेट। और माफी चाहूंगा, वो यूरेनस नहीं तो वो फेलिक्स थे यहाँ पे। और वो आए बढ़िया तरीके से डैमेज दिया, मेरे को लगा एक बार के लिए वो यूरेनस है। माफी वो स्किन होता जो है। स्किन है थोड़ी सी सेम रहती है, तो वो गोल्डन गोल्डन सी स्किन जो है वो चमक रही थी, लेकिन यहाँ पे वो यूरेनस नहीं थे, वो लूनॉक्स थे। और बढ़िया किल यहाँ पे लेके चले गए वो एमएम का। दूसरी साइड की बात करें तो अभी भी जो गेम है थोड़ा सा कंट्रोल वे में, काफी ज्यादा कंट्रोल वे में टीम खेल रही है, काफी ज्यादा सीरियस होकर खेल रही है। और ये दर्शाता है कि टीम कितना ज्यादा सीरियस है, तो ज्यादा किल के पीछे नहीं जा रही है और बहुत ही क्लियरली जो है आराम से यहाँ पे खेलती दिख रही है। और इसी के साथ यहाँ पे एक पॉज का डिमांड किया गया है, जिसके कारण मैच को थोड़ा सा रोका जाएगा। बैक एंड में जो भी दिक्कतें हैं उसको फिक्स किया जाएगा दर्शकों। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे केडीए की, तो कितना ही कम केडीए यहाँ पे चल रहा है पीछे, बहुत ही मैं कहूंगा डिसिप्लिन वे में गेम चल रहा है, बहुत स्लो गेम चल रहा है। लाइक पिछला यस, गेम जैसा चल रहा था कि फास्ट टू फास्ट वहां पे किल हो रहे थे, लाइक एक टीम को एडवांटेज मिला हुआ था। लेकिन इस बार आप नोटिस करेंगे बहुत ही धीरे धीरे गेम जा रहा है, हर एक जगह कैलकुलेटेड डिसीजन लिए जा रहे हैं। हर एक फाइट से पहले आप नोटिस करेंगे तो ज्यादा किल नहीं दिए जा रहे हैं, मुश्किल से एक किल मिल गया है बस, उसी पे टीम संतुष्ट हो जाती है, पीछे हट जाती है। और बहुत ही अच्छा जो जो ये बात यहाँ पे रहती है कि आप पीछे रह के खेल रहे हैं। और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है टूर्नामेंट में, क्योंकि टूर्नामेंट में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो टावर लेना है, ना कि किल। स्किल से आप गेम नहीं जीतोगे, जीतोगे आप वो लेन क्लियरिंग से, वो टावर से। 100%। एंड यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं तो टीम्स को डिसिप्लिन गेमिंग देखना ही करना ही पड़ेगा। एक बात दोनों के दोनों टीम के हाथ से अच्छी लगे, स्पेशली टीम नोरे टी के नोआर टी के हाथ से भी, कि वो अभी जैसे यहाँ पर दिख रहा है ओपनिंग देखिए, बट कोशिश रहेगी पीछे की तरफ से आएंगे, कट थ्रू का इस्तेमाल किया जाएगा और केबल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे लॉकडाउन किया, उनको फिनिश ऑफ करते हुए जाएंगे लैंसलॉट मौजूदा। और कोशिश रहेगी इनकी की डैमेज देते हुए जाएं, लेकिन यहाँ पे डार्क साइड आता हुआ दिखेगा। उसके साथ साथ ये डैमेज लूनॉक्स का बहुत ज्यादा चुभने वाला है, जिसके कारण हाइलस को यहाँ पे बैकएंड में जाना पड़ेगा और उनको यहाँ पे बचते हुए निकलना पड़ेगा। दूसरी साइड की बात करें, जिस तरीके से गेम यहाँ पे जा रहा है वो बहुत ही मैं कहूंगा जैसे कि पिछले बारी में बोल रहा था कि बहुत स्लो पेस गेम चल रहा है। तो आपका जो टरेट अभी तक लिया नहीं गया, पीछे से फैनी आएंगी कट रोड लगाते हुए, और इसके साथ यहाँ पे विलेज सोन को फिनिश ऑफ किया जाएगा। कोशिश रहने वाली है थोनरोजिस का इस्तेमाल करते हुए, लैंसलॉट एक किल उनको मिल चुका है, क्या डबल किल ले पाएंगे? जी नहीं, यहाँ पे पेट्रीफाई लगाएंगे मेज उनका, बढ़िया तरीके से आउट प्ले, और उसी को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा लैंस को।
अब टीम जो है पीछे हटेंगी, उनको पीछे आना पड़ेगा। एक बार फिर से गेम का रुख जिस तरफ बदला था, वेलेंट गोल उस रुख को अपनी तरफ दोबारा यहाँ पे जो है खींचते हुए, एक उनकी तरफ से जो रुख है वो दोबारा वहां पे पलटता हुआ। वेलियन गोल के पास डेफिनेटली कम बैक करने का पोटेंशियल वो हमें दिखा रहे हैं कब से। इवन दो इट्स जस्ट अर्ली गेम, फिर भी उन्होंने उन्हें देना नहीं चाहते अपने ओपोनेंट्स को। तो ये काफी न्यू दिख रहा है मेरे को वेलियन गोल्स के। सो देखते हैं यहाँ पर टर्टल कैसे सिक्योर करेंगे, क्योंकि फैनी को थोड़े बहुत दिक्कत होंगे वो रिवर एरिया आने को। एंड इसी के साथ कैनी चालू कर देते हैं टर्टल। नाउ अगेन यहाँ पर कैनी जो है उन्हें ट्राई करना चाहिए विद थॉर्न रोज, बट क्या होगा देखते हैं। कोशिश रहने वाली है अंदर की तरफ जाते हुए देखेंगे। फोबियस बहुत ज्यादा अंदर जा चुके हैं और 3 बंदों के बीच में वो डैमेज क्या वो कर पाएंगे। कोशिश पूरी तरीके से यहाँ पे जोन आउट किया हुआ है, फ्लोरेस पाथ पे का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे अल्टीमेट लगाते हुए बचना पड़ेगा। उसी के साथ यूरेनस मौके का फायदा उठाते हुए बचते हुए निकल जाएंगे। दूसरी साइड की बात करें तो डैमेज देते हुए गए जरूर है यहाँ पे, लेकिन बच जाएंगे एडिट। सिर्फ जो है यहाँ पे मेज यानी कि फिलिक्स उनका खात्मा होता हुआ दिखेगा और वो भी सेलेस्टियल ट्वेलाइट के यहाँ पे जो है बराबर में। अब बात की जाए जो गेम यहाँ पे चलता हुआ जा रहा है टॉप लेन की तरफ, वो लेन निकालने का प्रयास करती हुई दिखेगी टीम किसी भी तरीके से। फटाफट से वो लेन यहाँ पे जो टावर है वो लेने का प्रयास करती हुई जाएगी, लेकिन दूसरी साइड पे दिक्कत हो सकती है। डैमेज आता हुआ दिखेगा और यहाँ पे केबल का इस्तेमाल, सीधा डैमेज दिया जाएगा। दूसरी साइड की बात करें मिड का टरेट जरूर टूटेगा, खुद को सैक्रिफाइस यहाँ पे करना पड़ेगा टैंक को वो टावर के लिए, लेकिन वो सैक्रिफाइस सक्सेसफुल। और इसी के साथ यहाँ पे पड़े 2 योद्धा महाशय हमारे हमारे जो हमारे जो प्रोडक्शन वाले हैं भैया, उनको लाशों से बड़ा लगाव लगता है। और यहाँ पे दूसरे मेरे भी दोस्त को था ले और उसको फिर एक दिन पुलिस वाले उठा के ले गए। तो भाई थोड़ा देख के रहना मेरे दोस्त, जिसको भाई थोड़ा संभल गए। ओह साइड माय। की बात करें अभी तो टीम यहाँ पे वेलिन गोल उनका रोटेशन आता हुआ दिखेगा बॉटम लेन की तरफ। देखता है यहाँ पर अगर उन्हें किल मिलेगी या नहीं। करिता का एक अटेम्प्ट था बस पुश चेक करने का, एंड वही जैसे ही क्लियर हो जाएगी फैनी का बफ तो वो आ ही जाएंगे। बट टॉप लेन पे काफी ज्यादा प्रेशर, एंड वही सेम बॉटम लेन पे भी। यहाँ पर बॉटम लेन पे टीम नोआर्टी के हाथ पे प्रेशर, एंड टॉप लेन पे वेलियन गोल्स के हाथ पे। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ईडथ जो है बार बार बॉटम लेन पे वो ट्राई कर रहे हैं कि फोवियस टीम फाइट ना ही ज्वाइन करे। यहाँ पर देखिए फोवियस को इवन दो देयर वाज अ सपोर्ट, फिर भी वो नहीं बच पाए। यहाँ पर हाइलोस तो बच जाएंगे, चलो मान लेते कि वो टर्रेट भी बचा देंगे, बट अभी जो है मिड लेन पे ये नहीं अच्छा दिख रहा है। के साथ कियोशी मेगा किल, एक के बाद एक किल, इवन दो दैट वाज अ फ्रेया, अ फाइटर, असैसिन। क्या ही डैमेज बढ़ रही है अभी। मेरे को यही दिक्कत आती है कि आप डैश के सामने मोबिलिटी इतनी ज्यादा है आपकी कि इतना ज्यादा डैमेज देंगे, लेकिन डैमेज यहाँ पे पड़ेगा वो शॉटगन का सीधा फेस पे और उसी के साथ ताराशाही हो जाएंगे। लेकिन क्रेजी यहाँ पे आउटप्ले, जिस तरीके से वहां पे वो डैमेज पड़ा शॉटगन के द्वारा उनको फिनिश ऑफ किया। लैंसलॉट अभी मौजूद है, ग्रोस पाथवे का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रेज वो फाइट फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ आए हैं और डैमेज देते हुए देखेंगे। फैनी बहुत ही कम एचपी पे, उनको पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि वो डैमेज इस समय आ चुका है। लैंसलॉट अभी भी मौजूद है, यहाँ पे पंचर का इस्तेमाल करते हुए बचते हुए निकलेंगे और फ्रेया मौजूद है, उनका बेसिक यहाँ पे चुप सकता है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। थोन का इस्तेमाल किया है, लैंसलॉट पीछे की तरफ जा चुके हैं, मेज यहाँ पे वापसी कर चुके हैं और यहाँ पे वेलेंट फूल्स उनको पता लग चुका है कि फाइट लेने का भी कोई फायदा नहीं है, तो पीछे हटेंगी और बैक ऑफ होने के लिए बढ़िया तरीके से तैयार। दूसरी साइड की बात करेंगे, कोशिश रहेगा ओबियस अभी भी जो मौजूदा यहाँ पे इनिशिएट करते हुए दिखेंगे, लेकिन चर्चल लून का आगमन हो चुका है और लॉर्ड चर्चल नहीं, यहाँ पे लॉर्ड अपनी जो डीवा है उनका आगमन होता हुआ और इस लॉर्ड को डीवा को लेने के लिए जो टीम है यहाँ पे आती हुई दिखेंगी और इस डीवा के लिए यहाँ पे जो फाइट है वो हमें आती हुई आपको प्रारंभ हो सकती है। टीम की बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे मेंटेन करती हुई जा रही है। 9-9 का स्कोर यहाँ पे चल रहा है, ऑलमोस्ट बराबरी पे हमें जो टीम है वो खेलते हुए दिखेगी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। एक स्टन पड़ा और उसी के साथ फिनिश ऑफ किया जाएगा कियोशी को। इस बार उनका जादू नहीं चल पाएगा और 4 बंदों के बीच में सीधा ताराशाही होंगे। शॉटगन का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर दूसरा डैमेज देते हुए और उसी के साथ एक और किल यहाँ पे ताराशाही। थोनोसिस का इस्तेमाल, लैंसलॉट अंदर की तरफ गए हैं, क्या वो डैमेज दे पाएंगे? कोशिश जरूर रहने वाली है और डैमेज बहुत ज्यादा आता हुआ, बहुत ही अच्छा खासा डैमेज मेज की तरफ से और उसके साथ साथ एक सेटअप दिया था, लेकिन एमएम को उनको बचना पड़ेगा।
बढ़िया अच्छा खासा डैमेज, बच्चा खासा सेटअप मेज की तरफ से पीछे से एमएम का डैमेज बहुत बढ़िया तरीके से फाइट को इनिशिएट किया था। लेकिन दूसरी साइड की बात करें, एक स्टन यहाँ पे पड़ा और कियोशी वहां पे धराशायी हुए, और मैं यही लक्की स्टन की बात कर रहा था। अगर एक स्टन पड़ेगा तो आप फिर बच नहीं पाओगे टीम फाइट पे। अब यहाँ पे बात की जाए लॉर्ड लेने के लिए, तो उनको फटाफट से लेन क्लियर करनी पड़ेगी। लेन प्रेशर आप इतना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा चांसेस आपके पास रहेंगे कि ये लॉर्ड आपकी तरफ जा सके। चलिए देखते हैं क्या होगा। दोनों की दोनों टीम्स काफी अग्रेसिवली खेल रही है, स्पेशली टीम नोआर रहता, उनको उनके हाथ पे आ चुकी है एडवांटेज, एंड यहाँ पर वेडिंग रूल्स की भी कोई कमी नहीं, काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उनको। बट वही दिक्कत है कि फोविस जो है पहला जंप कर रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा। कोशिश रहेगी जरूर अंदर की तरफ देते हुए देखेंगे, और एकदम से यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ कि फास्ट एंड फीड यहाँ पे जो है एकदम स्पीड बन गए थे सब लोग। लेकिन दूसरी साइड पे शुगर रश वो आता हुआ दिख सकता था, लेकिन अभी फाइट होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे वॉल की तरफ दिक्कत हो सकता है, बढ़िया स्टन आता हुआ दिखेगा, उसी के साथ केबल का इस्तेमाल किया जाएगा, फिनिश ऑफ किया जाएगा कट थ्रोड लगाते हुए। मेज यहाँ पे सस्टेन करते हुए, लेकिन कितनी देर तक सस्टेन करेगी क्योंकि केबल का डैमेज हमें आता हुआ जाएगा, लेकिन फिलिक्स उनको यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। कियोशी उनको धाराशायी किया गया, और इसी के साथ जेन भी यहाँ पे धाराशायी हो चुके हैं। डैमेज डीलर आपके दोनों जा चुके हैं, आपके पास डीपीएस नहीं है, आपको पीछे हटना पड़ेगा और यहाँ पे लॉर्ड जो है वो रीसेट करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये गेम जो है थोड़ा और लंबा यहाँ पे खिंचता हुआ। लैंसलॉट बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पे कैनी, बावजूद इसके कि सामने काउंटर है उनके, यानी कि फूबियस, उसके साथ बावजूद यहाँ पे बढ़िया तरीके से गेम पे बने हुए हैं। लेकिन दूसरी साइड पे देखना पड़ेगा, ग्लोरियस पाथवे का इस्तेमाल अल्टीमेट इस्तेमाल करते हुए मेज यहाँ पे गलती हो सकती है, यहाँ पे एक गलत इनिशिएटिव और उसी के साथ गेम जो पूरा पलट सकता है। जो बिल्कुल अंदर की तरफ गए थे दो बंदे धाराशायी, और ये भारी पड़ गया मामला। अब आउट नंबर हो चुके हैं, आपके पास जो लॉर्ड लीड थी वो भी जाएगी, और यहाँ से जो है लॉर्ड लेते हुए टीम नॉर्थ नॉर्थ उनके पास अच्छा खासा मौका कम बैक करने का, और डैमेज जो है वहां पे देते हुए दिखेंगे। लॉर्ड्स लेन हो चुका है, केबल का इस्तेमाल करते हुए कोशी को वापस आना पड़ेगा, और एक पल को जो लग रहा था कि टीम वर्ल्ड एंड गोल इस मैच को लेते हुए जा सकती है, वो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी में। लेकिन आई थिंक ये लॉर्ड यहाँ पे इजिली डिफेंड कर लेगी, ज्यादा हैवी लॉर्ड नहीं है, अर्ली गेम का लॉर्ड है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर कोशिश ये रहेगी कि आप अपने जो टरेट्स हैं वो बचा सके, ज्यादा टरेट यहाँ पे जो है आपके वेस्ट ना हो। डेफिनेटली ओके, वापस से बॉटम लेन पे यहाँ पर थोड़ा बहुत हो तो रहा है, बट नहीं, एज़मोडस के हाथ पे रिवाइटलाइज बच तो गए, बट कियोशी को लो करके निकले। ना एनर्जी है ना हेल्थ है, तो उन्हें अभी वापस पीछे जाना पड़ेगा। लॉर्ड भी आ रहा है, अभी टीम वेलिंग गुल्स ट्राई कर रही है टॉप लेन को जाने के लिए, अपने टरेट्स बचाने को, बट वही समय पे टीम नोआ टीम मिड लेन क्यों नहीं लेती है, काफी अच्छा चांस है। एंड यहाँ पर बीट्रिक्स भी काफी अकेली है, तो वो हो सकता है, बट नहीं, क्या से नॉकअप के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट लॉर्ड फिर भी हेल्दी मिड लेन बचा दिया है, जस्ट दो जन से। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके का डिफेंड यहाँ पे आता हुआ, और चलिए इसी के साथ ये लॉर्ड को डिफेंड कर दिया जाएगा, और गेम एक बार फिर से कशमकश के बीच में आता हुआ, फिर से एक बार जो है फाइट हमें आती हुई दिख सकती है। उसके साथ कियोशी अंदर की तरफ घुसे, टैप थ्रोड लगाया जरूर जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिवाइटलाइज का इस्तेमाल करते हुए हील करते हुए निकल जाएंगे यूरेनस, और बढ़िया तरीके से वो डैमेज को सर्वाइव किया उन्होंने। वो यूटिलाइज स्पेल जरूर हो जाएगा उनका, लेकिन जान बची तो लाखों पाए, और चलिए वो हील भी हो जाएंगे बढ़िया तरीके से अपने पैसे के थ्रू। टीम्स तो डेफिनेटली रेडी है और एक फाइट के लिए, स्पेशली टीम नोआर रहता। देखिए जैसे हम मिड लेन पे देख रहे हैं, फोबियस वंस अगेन ट्राई करना चाहते हैं इनिशिएशन के लिए, फैनी घुसते हुए। कोशिश यहाँ पे वॉल लगाने की, थोड़ा सा पोक करने की कोशिश करते हुए देखेंगे। इमेज की तरफ से एक साइड जरूर आ सकता है, लेकिन थोड़ा स्पॉट कर लिया जाएगा उनको, जिसके कारण थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में कमी आती हुई दिखेगी। अंदर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, दिक्कत हो सकती है। कियोशी थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टन हो गए तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी आपकी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तो वो बनेंगे चिमनी और यही के लिए, क्योंकि यहाँ से डैमेज आता हुआ दिखेगा, और इसी के साथ जैन का डैमेज। ये देखिए कि आशीष बढ़िया तरीके से गए अंदर की तरफ, डैमेज दिया, फिनिश ऑफ किया, और इसी के साथ 3 बंदे धराशायी।
उच्चा रेट बचाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। मिड की तरफ फायर होता हुआ दिखेगा और मिड का उच्चा रेट लेने का प्रयास, कोशिश पूरी तरीके से टीम जो है लॉक इन होती हुई जाएगी। शॉट डन का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं, डैमेज देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रेंज के कारण बचते हुए निकलेंगे। पीछे की साइड लैंसलॉट पीछे की तरफ आएंगे, अनस्टॉपेबल लेते हुए गए, रोकने का प्रयास किया जाएगा ग्लोरियस पाथवे का इस्तेमाल करते हुए। अब उनको बचना पड़ेगा। लॉर्ड का आरंभ हो चुका है, टीम वेलिंग गोल के पास मौका अच्छा खासा है। अगर लॉर्ड को यहाँ पे किसी तरीके से ले लेते हैं तो मैच जीतने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जंगलर को आपको मारना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि लैंसलॉट के पास एक मौका रह सकता है कि वो सीधा आके यहाँ पे जो है वो लॉर्ड को उठा सकते हैं। पंचर का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। कोशिश रहेगी, थ्रोन रोजेस का इस्तेमाल कर दिया है ऑलरेडी, तो आपको बहुत संभल खेलना पड़ेगा। वो लॉर्ड लेने का प्रयास करते हुए आ चुकी है टीम। रेड ट्री लगाएंगे जरूर, कोशिश पूरी तरीके से, क्या वो सफल होने वाली है? क्योंकि वो डैमेज आता हुआ दिखेगा, वो मैच का सेटअप आता हुआ दिखेगा, उसी के साथ शट डाउन आता हुआ दिखेगा। सेलेशियल ट्वेलाइट डबल किल यहाँ पे लेते हुए गए हैं, लेकिन गुजाराशाही हो जाएंगे मॉन्स्टर किल। और गेम जरूर आपने अपना बना लिया। लॉर्ड जरूर यहाँ पे टीम और चिचिया को मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप ये इजीली यहाँ पे डिफेंड कर लेंगे। लॉर्ड को बेस में पे पहुंचने से पहले ही आप गेम में यहाँ पे फिनिश ऑफ कर देंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनहांस मिनियन की बात करें, वो भी लेन ज्यादा नहीं आने वाली, क्योंकि लॉर्ड ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। लॉर्ड आएगा अभी यहाँ पर, और उसी के साथ टीम वेलिएंट गोल्स वंस अगेन। ओके, टॉप लेन पे निकाला गया लॉर्ड को, वो काफी जल्दी था वो। एंड इसी के साथ इवन दो टीम नोआर रहता आर द वंस टेकिंग द लॉर्ड फर्स्ट, उनका ही पहला इनहिबिटर गिरा, तो वो काफी कंसर्निंग का बात है। तो टीम्स को यहाँ पर डेफिनेटली टरेट बचाना पड़ेगा, स्पेशली यू नो इनहिबिटर्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। एंड अभी यहाँ पर मिड लेन पे काफी ज्यादा प्रेशर है, एंड मिड बीइंग मिड, ये देखो फैनी वापस घुसते हुए अंदर की तरफ गए हैं, केबल का इस्तेमाल किया जाएगा, कट थ्रोट दोबारा से लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बचते हुए निकलने का प्रयास करना चाहती थी एडिथ, उनको मृत्यु के गार्ड सुला दिया जाएगा। पीछे से मेज आएंगे, डैमेज देते हुए फिनिश ऑफ किया जाएगा फ्रिया को। और यहाँ पे फीलिक्स बचते हुए निकलेंगे, स्टन आएगा और उनको भी फिनिश ऑफ कर दिया है। 4 बंदे दरअशाई अकेले हीरोइनस, क्या वो सस्टेन कर पाएंगे इतना ज्यादा डैमेज? मेरे को नहीं लगता। उनको फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा सेलेशन लाइट के द्वारा, और उसी के साथ रीगोल का प्रदर्शन आता हुआ बेस लॉक इन करेंगे, बेस के ऊपर प्रहार, और इस मैच को अपने नाम करते हुए जो ये मैच है यहाँ पे टीम वेलिएंट गोल दोबारा से जीती हुई, और इसी के साथ 0-2 का स्कोर यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है, या 2-0 आप बोल सकते हैं यहाँ पे, उसका प्रारंभ हो चुका है। बहुत बढ़िया गेम प्ले टीम वेलिएंट गोल की तरफ से, हर एक जगह बढ़िया तरीके से, चाहे रोटेशन की बात करें या स्लो गेम की बात करें, जिस तरीके से गेम जा रहा था स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्लो पेस गेम था, लेकिन जैसे जैसे मिड की तरफ लेट आया, फैनी ने अपना वो केबल दिखाया कि क्यों वो बेस्ट है यहाँ पे। केबल का बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शन, उसके साथ साथ चैंग की भी तारीफ की जाए बहुत ज्यादा कम है। ऑलमोस्ट हर एक टीम फाइट पे अवेलेबल थे। इनिशिएट की बात करें, उनकी तरफ से बेहतरीन तरीके का इनिशिएटिव, और हर एक उन्नत रूप में टीम जो है बढ़िया तरीके से, लेकिन अगेन यहाँ पे जो टीम है नहीं, और वो भी नहीं आ रही है, वो भी जीती है एक तरीके से। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि उनको अपने आज जो है पॉइंट्स मिलेंगे गलतियों के, उसके ऊपर वो अभी वर्क करेंगे, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा इंप्रूव होके आएंगे ये टीम। 100%। एंड ऐसे ही टीम्स इम्प्रूव होगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर बाकी के आगे टीम्स एंड इवन ये वाले टीम्स सेम कुछ अलग ट्राई करेगी, एंड कुछ अलग माने कि जैसे आज टीम्स प्रैक्टिस कर रही थी, मे बी नेक्स्ट टाइम हमें पता नहीं हार्ली खुला दिखेगा, या मे बी मार्सेल भी खुला दिखेगा। तो देखते हैं क्या होगा। एंड इसी के साथ 2-0 पे खत्म हो चुकी है। वेरियन गोल्स काफी अच्छे तरह से खेला है, इवन दो उनके पास काफी दिक्कतें थे गेम पे, डायरेक्ट डायरेक्ट काउंटर्स थे, इक्वल ट्रेड मार रहे थे टीम नोआ रहता, बट फिर भी इट इज बिलियन गोल्स इतना आगे आ चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशंस टू देम। आगे स्क्रिम्स में भी देखना चाहती हूँ कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं, बट फॉर नोआ रहता एज वेल, कांग्रेचुलेशन। जी बिल्कुल, और इसी के साथ देवी और सज्जनों लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद जो दूसरे मैचेस हैं वो देखने के लिए भी आप रेडी हो जाइए। उससे पहले याद रखिए सोशल को फॉलो करना है, स्ट्रीम को शेयर करना है, और हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to the weekly Screamcast at obviously Algambo Esports. We're having our weekly Screams into the way. I mean, I just add the cast word because I'm going to cast here. That's easy. Your boy here. And with me, sir, then Ray will be joining me as well. So, Ray, you're looking so handsome with that portrait of yours, with those, with that background as well. I feel like you're standing in a, like, you know, in an aquarium and the bubbles are just getting I'm just joking. I'm just joking. But talking about it, Ray, what do you feel like? These two teams. I've been watching them in the last tournament, Velocity Esports as well as Team Ethereum. Though they couldn't manage to go into the round of 16 or round of 8, that is the quarterfinals, but they managed somehow between that round of 32. So what do you think? Like these two teams again back to the screen stage. They're gonna practice more and more so that Different they will perspectives perform expose the in same some truth. next tournaments of 2, Algambo Esports as well 1. as in other I MOBA am a daughter tournaments. of Northern Vale. Yeah, I looking swear to forward to that, protect you till Ash. my last And breath. it's mainly really grateful to Algambo Esports for hosting these weekly Welcome scrims to for the especially greatest these night teams show of all themselves time. who have been participating relentlessly, trying to obviously improve. I love squads that, take their time off to scrims. A lot of teams, I mean, I'm not calling them out, but genuinely, some teams really stay fixated on rank games, They think climbing up the ranks and maybe getting the that India rank or something means something. No, guys, it doesn't. If you're Yeah. trying to chase something in a tournament scene, I mean, if getting a global title is your thing, go ahead, man. But that scene is completely different. To win in a tournament, you need to constantly play against other teams in the tournament scene as well. And so scrims is obviously the main thing. And thanks to Algambo Esports for once again for bringing the mobile warm-up clash immediately after the tournament that finished recently, right? So yeah, looking Mhm. forward to how these two teams perform against each other. Let's see if they've improved or they are still trying to figure things out. And Ash, why are you saying only my background? Even your background looks like you're in an aquarium. So Definitely. I mean, your black blazer is kind of suiting that background for real. I mean, my right. gray one is not that much power, but the Ethereum, banning out the Harley, the Grok, as well as the Marshall. I've been knowing this Marshall is literally awakening. It's a reckoning for the opponent's side when it's get attached with some combinations, proper combinations I like am not the Ranger, only one bound by Beatrix, these or God. chains. But for now, Magic is we're gonna my see that life. Uranus coming in. They wanna go for the sustain, the front line, into the EXPN. What else we gonna see? Okay, the Phobius with the Harrop, the Valor and ultimate loyalty in combination, a the dead PH body. combination, the MPL PH combination, whatever you can see. But this combination is actually have a deadly thought into it because now you can't counter the Harrop onto the team fights. You can only go for a lane to lane matchup like a Beatrix, or maybe you're gonna pick a Irithel or Granger. But other than that, you cannot take him down in a team fight. It's more like a Phobius who could have done that. But there is a chance that you can
come up with the Arlot, but at the same time, the Arlots will be getting countered by the Phobias with those dashes. It will initially, giving more and more, infernal pursuits to that Phobias. But on this side, we see the Leo mode coming in with the carry. But Ray, do you think the Leo mode is working right now? After the recent patch upgrade, Leo mode is kind of nerfed. Don't you think? I think, these adjustments stats wise, I feel like a lot of the times, sometimes people overestimate or sometimes underestimate the changes, because to be fair, numbers cannot exactly tell us, how much the hero has changed in the game, because there's a lot of calculations that goes into the final damage and the sustain. So the best thing is obviously by practicing it. So it might be a good way to see the adjustments on place. We might be, seeing the Leo mode still kind of being the same. Maybe the adjustment did not hit him hard enough, or maybe we would see it considering there is a Phobias that will benefit from his dashes quite a bit. So those things are something that Team Ethereum should have considered, or maybe they are considering. They are going for the carry at least. So that means that Phobias in the late game won't be much of a issue, because obviously the true damage from carry will melt him straight away. Carry is also one of the only marksmen that can actually kind of go toe-to-toe against the Harrods right from the early game for a single reason: the true damage. Yeah. Let's see how they're gonna perform here, because somehow Team Ethereum, they really wanna go for those true damage onto the side, as you mentioned, and that will actually give a lot of melt to that Phobias. But for now, okay, the sweep is here into the ban list with the ZTN following up. From this side also, we can see the Godot Gotcha as well as the Kadita getting back. Not for the Kadita, but I feel like if Team Ethereum at this point gonna go for that high loss into the roam with a Kimmy into the mid, it's gonna work efficiently good for them because they have a carry already, the true damage. I'm gonna go for something continuous burst as well as another proper sustain onto the front line, and you're able to stay for the fencing job, obviously. So all this preparation might gonna get you the win in the first set already. But from this side, if you can actually see, they have went for the lead. Minotaur with the Odit coming in here. Okay, that's kind of new for me. The Odit, it does have the true damage as well. It can melt the tanks, but at the same time, she's kind of vulnerable to those dashes. Like if she will be misplaced or she will be pushed back from the ultimate, that is the Dancing Swan or Black Swan, whatever it is, she will not be able to readjust it. It will get initially off. The ultimate will get turned off. That's kind of a things comes with this Odin ultimate. But Minotaur being there is kind of a setup position. Okay, they're gonna go for the utility jungler here. That's the Akai. That's also a new thing here into this meta, because we don't gradually see the Akai pushing into the meta here. But from the side of Team Velocity Esports, we're going to try it because, after all, it's the weekly stream. You can actually experiment out your internal, experimentation in which you can try out some drops, try out some heroes. But looking after the drop trade, what do you feel like? Who will have the early game? Who will have the mid game to let phase of this set? It's pretty clear that Team Ethereum has a much stronger late game phase into their favor. And yeah, you're absolutely right about one thing, that since these are weekly scrims, this is where you're actually supposed to try things and not shy away. And with this, we're going to be heading into that Land of Dawn. We're going to be seeing that little bit of a greenery in the game, as well as the theme. And Ash, take us into the game as we're going to witness this best of 3 scrims between Team Ethereum and Velocity Esports. Definitely, Ray. Thank you so much, Team Ethereum, going against Velocity Esports for the first game at this weekly stream, and the second match, you can say, but already into the mid. There is some ruckus going on because the Minotaur is just getting a lot of first from the lead. Okay, want to go for the invade, but nice zone out from the winner. For now, the early first blood does look to be the favor of the Valid, clearly, due to the fact he's much more stronger in the early compared to the Odette. But once the level 4 power spike comes in for the mid lane, the Minotaur and the Odette just outshines them completely. So maybe that is something they have to take into consideration. Other than that, the heavy spin is there for, of course, the Akai. But okay. By the looks of it,
all of them need the level 4 power spike. Even the Leo mode needs it, the Kaja needs it, everyone needs it. So except for the gold lane, the rest of the team fight, I believe, until they reach the level 4 power spike, unless they're kind of making rash decisions, we won't see the team fight until this hurdle. Yeah. I mean, that's the thing. Like, if you're gonna start it into your way, you need at least 1 to 2 kills, and at least the EXP leader should be taken out if you really want that total into your hand. That's the reason they're totally waiting up for the Phobias from the behind. We see the Akai coming in here, and he's right now also the sustain. So he does have a lot of damage in the early phase of the game. So at this moment, you cannot take out the jungler. It's more like you can take the subsidiary part of the Roma, or maybe the mid lane or EXP lane. Or now the Phobias joining into the total fight. They're going into the vicinity from the behind. We're going to see the Phantom Seed coming into the way, and that's the Leo mode goes. And will he go for the retribution? Akai will just take it onto his hand with this Dancing Swan. Comes to the way, flicker. Asaragi falls down. They goes back. Infinite Pursuit. 2-member caught in the way. Zenon falls down first. Double into the hand of Panda. Triple now. Kaizen will be taken out into the hand of Valir. What a start for Velocity. Turtle into the hand. 3 kills grabbed up as quick as possible, and now invading the jungle of the Leo. Taking out his Lava Golem. He's going for the red buff. Nobody's onto the follow-up setup. And again, the Leo mode is getting trapped down there. They're overdoing something here. Fantasy into the wave once again. Valir taking a little bit of slowdown. Retribution popped up. Killing spree on the hand of the Panda. My goodness, it goes inside the tier. But it will be just 1 casualties into the hand of Velocity without losing any. Biggest trade, I'll say, in the early phase of the game. Like, this is a massive trade. Yeah, I believe as well, Ash. Especially considering I think they weren't expecting the Valir to be that problematic for themselves. That 100% created the biggest issue, I believe. And that will definitely impact how they move forward into this match. Other than that, for now at least, 0-4 score for Velocity Esports, who are leading the game with a big charge. The gold laner is right now going to be the main key factor, the one taking control of the game, isn't it? So that's something that they have to take into consideration. So let's see what happens as we kind of move forward. Top lane, a little bit of poke here and there, but nothing much. Yeah. They want to try it. They really want to try it. The early game, they managed to secure the early game in that way, and now they know that they have the damage. Char, oh my goodness, he's in a very bad position. Before he can cast out the Minion Fury, they wait for the Divine Judgment, and Babylon will be the one punishing that Minotaur onto the top lane. And now there is a chance that they're going to go for the turtle, easy turtle for the side of team Velocity Esports. They're just up to their name. The way they are facing off and facing on the game, they're kind of mid of a second. Yeah, they're doing pretty great right now, and they have a really good chance of taking the lead and perhaps just making it a sweep, because top lane. Go inside the tier, pushing him back onto the hand of death. This is the Akai's heavy spin, and into the way they're gonna go for the Zaman Force. We're gonna see that Minotaur marching out of the top, but nothing will happen here. You just take out the shield, the gold shield from the top lane, and then you grab the turtle. You take out the kill as well. Velocity Esports is kind of like accumulating each and every possible trade they can go for. So far, it's looking kind of decent for them. Let's see how they move through with it. For now, we're looking into the builds. The Kaja goes for the Thunderbolt. Okay, curiously not bad, but I feel like you could have honestly rushed the fleeting time to play more into the... Okay, Akai with the fleeting time. That is insane. To be fair, it's Scrims. I guess try anything, but I don't think Akai needs fleeting time. You don't... I mean, how much are you looking to spam? Like, like heavy spin, like full-on Beyblade? Like, is that what you want? I mean, you can actually go for something with emblem for the cooldown. No need of fleeting time, as you mentioned. Thunderbolt is needed. You can go for something of the sustain, like a anti-Curus, if you really want to take out Divine Judgment. Again, out of the Roma. He would have cast out the Minion Fury. 4-man knocker coming to the way, but he is out of the position right now and will get punished. Bursted by none other than the Valir. Kaizen falls out again. 7 for none. The score is 1 for none. The trade is, and again, the total is here.
By the looks of it, Team Ethereum are obviously definitely struggling, and I'm not sure what they can do about it, honestly, Ash. Because the other side, they're clearly putting in a lot of pressure themselves as well. So what is it going to be? That's the big question at the moment. So let's see. 0-7, Team Ethereum, at this point, what do they do? Do they wait? Do they just let Kerry farm? Is that going to be the strategy for them? Or is it not going to work out? Because for now, they're going to be losing another turtle. Yeah, let's see the turtle into the hand of Velocities. Well, they gotta cook it up for themselves. They know that if we're gonna try something into our way for now, we can actually cook it up because we already have a massive lead against Ethereum. Then again, Retribution on the point for Leomord. He somehow take out that blue buff into his way, but now the main threatening thing is okay. Phantom Seed was not aware of it. Gaza goes back with those taunts, and there is the Infernal Pursuit out of the top lane. Nobody's on the bot, and that's the prettiest move coming out from a guy. He's gonna clear it out. That lane totally. Looks like we're in for a kind of a slow game, Ash. It's slowly building up towards a favor of, obviously, the side of Team Velocity Esports. Kind of funny, their name is Velocity, but they're going pretty slow. But I guess sometimes slow and steady wins the race, doesn't it? So maybe that is it. Oh, top lane carry! It's gone. Okay, you're gone. I mean, that's the thing. Right now, you're totally out of your damage. You're kind of building your items. You've not even reached the Trinity mark. So you're kind of squishy. Not even a single kill has been into your pocket. So far, I'll say, like, defense is the ultimatum for Team Ethereum. If they really want to win this game or make their comebacks possible, then they need to go for the defense. Another fight coming to the way. This is the trap down going on. Beautiful escape for that Uranus, but re-engage is happening. We're going to see the Phantom Seed coming in again, and that is the heavy spin, but somehow he just marked himself out from that heavy spin. Now he will be fine, but do you think that Team Ethereum will be fine after all this ruckus onto them from Velocity so far? Yeah? Okay, I think my friend is having a little bit of network issue, but out of the top lane. For now, the Lord now will the come structure in. falls down there. Okay, the Lord is in here. Yep. Now I can hear you. So. Sorry, the weather is a little bit windy here. Same here. I mean, like there is a stuff called. I think Assam also have this. Kalo Baisakhi. Do you know this? Yeah. Boisakhi, Yeah, we do have this. Like, it's happened in the month of Baishakhi and summer. Yeah. Like the day which will have more humidity and more scorching heat. In the evening time, there will be thundering, little bit of storm kind of thing. This happens in our region, Odisha, Bengal, Assam. Yes. So I thought like you might be familiar with it. That might be the reason. But right now, you know who's the Kala Baishakhi. It is the Bangladesh team, Velocity Esports. They're really keeping up the pace from the very beginning of the game until now. Taking up the law, top lane marching, and you're gonna see that Hadith also coming in as well. We might gonna see the finish up from Team Velocity. Oh no! This is humiliation right now. This Harris is dancing onto the way, and there's the Minotaur with the Midnight Fury, but she's still surviving. Flickered out to the behind. The heavy spin comes into the way. They want to take out the Holy Shield before the Lord reached the ground, and they managed to do it. They succeeded on it. Talus falls down. That's the trouble onto the Seedon. It might be a triple onto the Uranus coming in as well. And the recall spam on the face. This is the end. I was hoping for no finish, but now it looks like they're gonna finish it out as quick as possible. They're striking out of the crowd. Diomo trying to defend it up. Doesn't matter, one falls down. In the end, it's Velocity marking up their name, marking up their domination into the Land of Dawn at this weekly SCRIMS. Yeah. And by the looks of it, Ash, Velocity Esports, they just played a slow and steady game and just did not really exactly care about much. And they just won it with no issues. I mean, you don't often see this kind of a clean game, but hey, it was a kind of a pleasure. Obviously, the one that
did not feel the pleasure is obviously the side of Team Ethereum right now, who face the wrath of the side. But to be fair, if this game went late, maybe we could have seen a different kind of a scenario, you know? So let's see what happens as we will right now. You know, Ray, I'll say one Yeah. part. Like the first part of the draft was okay, very okay for Team Ethereum. Sorry, yeah, Team Ethereum. But in the second part, I feel like they kind of are experimenting a lot of things, but at the same time, like the audit, the Minotaur is kind of not gonna work in this economy because at least the audit because you are kind of vulnerable to those dashes. Like that's the reason the last pick was the Akai. Whenever you're gonna cast your ultimate, the Akai will gonna hinder you out by misplacing your placement, by taking you out from your comfort zone. That's the reason you might not gonna, I mean, give more and more valuable follow-ups or access to your team with your heavenly burst. That's the reason the audit, Zidane couldn't manage to do anything here. But for now, the Yes. second game is about to come, Ray, and I believe Ethereum should learn from the mistakes. They have done a mistake in the draft. They have done a mistake in the early phase of the game. Like you cannot take out the Kai, you cannot take out the phobias. You should have controlled yourself into the jungle more rather than fighting the turtle. So I believe this could be the small things which can be pinpointed from this weekly stream by them. Because after all, it's for practice, it's for experimentation, it's not the real tournament. But still, you should play with an intent of the real tournament. Then only you can, surpass your previous mistakes, I believe. Yeah. That's true. I mean, you obviously cannot completely commit to like a composition that is clearly kind of weak. Yeah. I do understand why they wanted to commit to Odette. Odette is one of the mages that creates a good zone, which is Hmm. he's the only mage that you can actually kind of use if Eve is banned out, you know? So I Hmm. understand the intent, but the execution, I believe, yeah, they will definitely need a few more practice. And Odette is more of like a pocket pick. She's not something that you can, immediately pick and Hmm. expect to work. So yeah, she's more of a pocket pick that they will have to watch out for. Maybe in the future they might be able to figure it out better. But for now, yeah, this match was definitely not it. Especially considering the way to make Odette work is to make sure your opponents do not have any form of knockup. Phobos Counter. clearly has a Yeah. knockup. So I think Hmm. that is definitely something they should have considered. Not to Yeah. mention the Kaja itself, suppression also disabled. So what they could have Yep. done is honestly, Odette should have been the last pick. Something that they kind of make it Like, work. they went for the last pick, but main thing is you can already see that Kaja, you can already Yeah. see that Phobias being That's there. the thing. There is a huge chance they can go for the Akai into the jungle or the biggest Odin counter in the jungle, that is the Alpha. Spear of Alpha, use it. And poof, the Odin will just gonna delete it. Yeah, there's so many things. I believe Hmm. they kind of made a little bit of an early call, or maybe did Yeah. not judge it too well. But yeah, Hmm. for now we'll just be waiting for them. I guess it's since it's scrims, they will take a little bit of a break to come back. Tournaments are usually very rushing. We gotta start. But for now, by the looks of it, looks like we're just waiting for one teammate to be joining in. And until then, Ash, how's your day? Because Mine is so good, man. I mean, I just went to watch a movie today. That's Obsession. I mean, yeah, I'll not say everybody to watch it out because it's have a lot of. I mean, it's an A-rated movie, so yeah. If you're yeah, weak-hearted, if you don't want to watch, but if you are like you love to watch horror movies, then you should go for it. It's really good. And apart from that, I was watching MPL Indonesia because I missed it in the last week. I was kind of busy. So I was watching the whole, the BTK games. I mean, so BTK said, I said BTK. It's like Bigatron Alpha BTR game and all. So that's quite of a day for me today. What's about you? I mean, I heard you have the Carlo Boysaki. Yesterday we had that thing in our place, and one of our oldest tree in our house. Like we have our house, and then we have some land for the trees we planted. uh-huh. Oldest mango tree just fallen down yesterday, and I was quite sad about it because sometimes we get attached to some
Yeah. living things aside here. I mean, I don't know people get attached to the trees, but I literally get attached to them because I do. they give us fruits. And that mango tree, I've eaten a lot of mangoes from it since my childhood. When I was literally kind of 5 to 6 year old, that tree was kind of that old. And yesterday when it falls out, I was pretty sad about it, but it's fine. It's life. Something's gonna happen anyhow. But here is into the game number two. Shadow, yeah, I mean not Shadow, Velocity versus Team Ethereum. The bans are coming in. We might gonna see some respect bans from Team Ethereum. But talking about the Kaja pick, Ray, I am a is daughter it of the Northern master Vale. stroke from I swear to Velocity in the protect last it till race, my last game? breath. I don't think exactly, but I guess if you want to be safe, considering you are kind of weak to a composition that can pick off, so I guess just go for it. I guess it Different might still work, perspectives and it expose the definitely same will, truth. considering. But the fact that they are kind of in the second pick, that gives away one ban. Right now, they will have to ban the Mm-hmm. Zushin and the Marcel. That's going to be very mandatory, isn't it? So Yeah. that clearly means that if they're kind of lucky that Velocity Esports is also banning out the Freya, or else it would have been a massive disaster for them because the Freya would have I've been been left out open waiting as for well. too long. So there we go. The carry gets banned out. Let's see what is going to be the follow through. It should be a Zushin. Yeah, I was also hoping the Jushin, but for now, the Jushin has a lot of counters in the game. You can go for the Kimi, Valir is there, Lunos is actually working so well against the Jushin. So it's kind of a mind game. Like if you're picking up the Jushin, you need to follow it up with some proper, teammates. Butterflies Like born by not thy with a, wish, you can not guided go by for any lantern's tank. You light. should go for something which can actually give some good follow-ups with that Jushin, like a high loss. But there is the Jushin man as the raise on to the right side. We're gonna see it from the right side as well. First pick coming soon. I believe it might be into the Rome. Yeah, it is. Grok coming in, set off, and that's a quite tanky pick on the very first phase. Banning out Yeah. the carry and picking it up is actually a wise choice. But now Team Ethereum, they have a chance to go for the Gatot or Claude. What about the Claude? Why no one is picking the Claude in the goal? I guess they're not trying to play too Crowned try by hard. heaven's mandate, They want my to, legacy practice a shall little bit. I mean, endure. in tournaments, Now you lead Yeah. Claude the is way getting to the picked up. next Claude is adventure. just broken right now. He's the main prior pick. Everybody wants him. So I guess they want to kind of, try other things. Maybe that's the vision right here. But let's see. For now, though, they will pick up the Sora and the Zushin. Sorry, Zetian. Obviously, I only see Zushin. My bad, guys. But yeah, on the other side, since they have the clock, it already kind of makes the clock pick kind of risky already. Due to the fact that Okay. a lot of people Okay. forget. Yeah. I think again, Ray's having some problem from his side, but it's fine. It's fine. The late will get good. Sora is here. There is a This Chase land 18 is as our well. So homeland, you and have it a will soon be combination your with it's a burial ground. comp, I didn't it's cure proper the comp kind of pain. thing. Like the I shifting harness it. clouds with Fear the Phoenix gonna work so well. And if you're gonna add it up with some Gatot Kachas, AOG, then I mean that will be like a cherry on the top of cake from the side of Team Velocities, but they're gonna go for that Lapu Lapu as well as the Valentina into their way. I'm really gonna fascinating. I'm really fascinated about this Valentina I pick here am because vengeance instantly incarnate. when you look on to a Sora or Zatian, you just totally set your mind to go for the Valentina because you know that we can actually cook it up with this shifting cloud ultimate with the Fear the Phoenix ultimate. So it's more like a Valor two-way and sword royalty right in a now dead because they are body. giving us those ultimates. So opening up this Valentina is actually mechanical thought into the game and velocity, grabbing it up was really on to the mark. But as Ray mentioned, this is a weekly stream. You're not gonna go for the try hard. You will be trying soft out to your opponent's sides. You'll be trying some new heroes. You'll be trying some new, um, you know, I am the planning power of light strategies incarnate. The which can Immortal One actually chose bring me it to up some vanquish the magic for shadows that yourself plague and you're this gonna world. make it so much good with My practice mission and then you're is gonna to perform protect it into the real lives. stage as well. But on the side of Team Ethereum, they want to go for the Hylos this time, not going with that you know last pick like last time Minotaur. So I'm happy with this Rome pick here.
But from this side, two picks yet to come. They have yet to pick their goal laner. The Claude is open, and Claude gonna work so well against the Moscow. But other than that, if you wants to, challenge that Moscow pick, you can actually go again with that Haddon, I believe. Am I still lagging? Come on, No. Dexter. It's our show Okay, time. it's a little windy here, man. So I'm I apologize born with talent. if my voice lags sometimes. But yeah, the draft is coming up short. Okay, Velocity Esports, they do commit to the Cloud by the looks of it. Surprise! I honestly thought they might not. It looks like they will. And Amartis followed it up with a Guinevere into the last pick. The side of Velocity Sports again have kind of a solid draft, but I'm not sure how good that Guinevere jungle is going to be. Let's see though. The Martis is clearly my favorite because I don't see him often getting picked off into the jungle. I'm curious how can teams make it work. A lot of the times I feel like teams kind of struggle with it, but with this we are in the game. Ash, are you back with me? Yeah, I'm here. I'm here. So Rocky gonna go for the Martis. With the Martis, you really chose like a double-edged sword because if the early game doesn't work, you kind of go, man. Right now, we want to see that how it's worked for Osaragi. Even like this is weekly scrim. I'm also trying something new for my casting. Like if you have judged it onto your way, I'm a bit more focusing onto the analytical things today because I really want to make myself a little bit more analytical before some big tournaments as well, even in the Algambo esports because not every time the PvP gonna works because I believe the Indian scenario is getting changed. We might gonna go for those long 30 to 35 minutes games in which you're not gonna see more skills, but you're gonna see some proper engaging into the steers, macro sequence kind of thing. So at that time, I don't want to feel like I can't talk more. The analysis, like you will have more job and you will get more drain, and you'll then saying me that Ash, why you not learning those things? But talking about it, guys, the game is on, and you can see that early game invasion is happening on that high loss. You're gonna go back into the safer side. At that time, the boss gonna go for that throne leader. He really wants to go for that level 5 mark in the retribution for now. Yeah. Curious to see who gets the first blood. Like you mentioned, the Martis is obviously one of the heroes with the biggest caveats of the fact that he's just someone that can immediately fail. He's like a glass cannon. You make him work, you can snowball very hard and almost get a maniac or a savage, but you mess up even a little bit, there's a chance you completely lose the game. Because as a jungler, your obviously main thing is to give space to the gold lane to farm, right? If you cannot do that, it's kind of game over. Before now, both the teams have played so safe. Kaizen is waiting for the zone out to the bushes, and this is the dangerous grass map. So you have a extra bush behind the turtle, so you can easily hide out there. For now, the Lapu Lapu is showing the team fight as well. So team does have those skill 1 and skill 2 on for herself. She might gonna little bit hinder. Oh my goodness, that sets up with a spatial migration. Even though the shifting clouds the way Ron sounds like guys, you man down here, and now it might be the stone before he could take it out. He will manage to do a skirmish onto that Guinea as well. 2 for 1. It turns out to be a 3 for 1, and now it might gonna get into the 4 for 1 situation. Yeah, the Zetian. She will get trapped down there. 4 for 1. What a dominating start again from Velocity. Yeah, no surprises there, honestly. They're really performing better than Team Ethereon. I'll have to ask what pronunciation they're going for. But yeah, for now, at least the gold lane wise, Mystic Lord, again, actually, he will have a little bit of a better time in the late game. But that's the question, the late game. But Retribution. GG. That was the point-to-point retribution. Shifting class once again coming the way. Oh my goodness. But Kaizen goes down for a slate happen out of the Valentina. Osaragi goes down. Double Lapu Lapu still sustaining, but he will not get out from those ruckus. Will be taken out by Zedin there. Now it's a time for Sora to actually hinder out the blue buff. Okay, Zetian following up as well. Gonna give some burst. I'm gonna try to steal out the blue buff, and in the meantime, the Sony goes no.
That's an overextension here. Zeden, no, that's not needed. The Sora goes back. He should have went back as well. I mean, that was really not needed. Yeah. For now, Ash, I believe Velocity Sports, they have a clear goal in mind. They have already basically given them a good amount of space to the Lapu Lapu. He's already on to 3 kills. Lapu Lapu is obviously a pseudo carry himself due to the fact that not only is he the front line, the fighter, the sustain, but he's also someone that can dive into the back line and take care of every kind of ruckus and obviously dish out so much damage as well. Lapu Lapu is just generally, I mean, there's a reason why he was the most trending fighter alongside Yuzhong for a while, right? Anyways, right now, looks like they want to go for an engage. Geisen goes for the engage here. The blazing twist comes to the way. Zekian doesn't have the pass, and there's a lot. Bolted down into the fountain. Mystic Lord falls down there. Feels the Phoenix comes in, not this. There is a chance they want to go for those Mortis and JT as well. Mortal Coil going to help him out. Oh, that wall just give him a chance to live, I believe, because the spatial migration was on the point, but that little wall push him back into the little survival place, and that's the reason the Zetian managed to survive there. Once again, the deadly clause comes into the way, but it's more like Team Ethereum will just retaliate back without fighting, disengaging here. But that's a good choice. That's a good decision as well. But no, the Saragi, he believes on his retribution. He might gonna snatch it out with a 50-50 smite. Let's see. Yup, he will do with a Saragi, but there is a from the behind. We can see the blazing to it engage. He goes back with the PMI. Oh my goodness, this one with the Valentina shifting cloud. Twilight goes down as well. A lot of burst onto the Satan. He might not gonna survive. BMI comes in the way. He'll be easily going back into the safer side as well. He got the stun, doesn't matter. Now the spatial migration, and this time the Revitalize will not pick you out from the situation, and that's the reason Velocity Esports gonna grab 2 for non-trade after the turtle lose. What can Team Ethereum do, honestly? They are back again to square one, which is obviously relying on the gold laner. Moskov is the only one that can honestly do anything, but then again, he's not gotten the space to really farm up. So, what is it going to be? That's the big question. Other than that, looking at their composition, they have good amount of crowd control. They have good amount of frontline, I would say, not exactly the tankiest, mainly due to the fact that their Hylos is susceptible to the Claude on the DHS. Yeah. But other than that, it's kind of surprising. I'm going to be honest. Velocity Esports, their draft is very standard. It's just Claude, Grok, Valentina. You see these things every day, right? Team Ethereum have a bit more of a creative draft and approach, but they're the ones losing it out. This is a good example of a way, because look at that. Hylos is not even able to sustain Valentina's damage because she's 2 levels ahead. This is just a good display of execution being better than the draft, and Velocity Esports are basically showing it because, yes, obviously, draft matters quite a bit, but the execution, because no hero is bad hero. Anything can make work if you have the rules to set up, and they're doing a pretty good job. Look at that. Okay, that's a special migration valve. You can combo. He gonna go out, but no chance for the hardest to goes back. That's because right now the level gap is so high, and you don't have much items into your way to sustain all those damage. Again, the early game just goes in the hand. You're gonna try out for a 50-50 smite. 3 turtles into a row. You're gonna lose it out. Special migration. You're gonna go for the thundering stride. Saragi goes down first, killing spree to the head of the cloud. Got a double into that Sora, and now he might gonna go for Zeden. Slither of HP for that Greeny, but somehow he managed to get back, flick it out, blazing to it, triple secured. Wanna go for a maniac? No, got shut down there by that Hylos. 2 men surviving here. Hylos, he's getting trapped. That's a little space when he will just get out into the maze. But right now into the mid lane, they're gonna give some pressure into it. Moscow follows up, clearing out the minion waves there. Team Ethereum, okay, looking at the itemization, Moskov obviously doesn't go for the boots. Good decision. You want to prioritize the items as much as possible. He's kind of matching Claude because of the simple fact that he did not buy the boots. But then you look into the fact that Claude is 2k ahead of him. And
he's almost done with his staff. He's just, obviously, the recipe items make him look like he's kind of equal, but the moment he gets a 300 gold more, he's going to be done with his staff, and that's going to be one item ahead, putting him at power spike of the... There we go. We got it. The Trinity is done. And right now, Claude is way stronger than the Moskov, who's only sitting at 2. Twilight also gets that. Man, I missed the item Twilight Armor. Could have been a nice pun. Twilight get the Twilight Armor, but oh, top lane, look at that. Oh, Spear! No. Spear, but he kind of missed the Blazing Duet, I believe, because he could have used the BMI not to escape, but to take down that Sora. He does have that damage here. It's fine. You want to play safe. You don't want to give out those goals. Oh, that's a good, nice jump. Spatial migration. Final blow from the Claude. Moscow falls down. BMI used for the defense. He goes back with the BMI. And that's really a good setup from Gwynny. I mean, he anticipated it that the Zatian, not the Zatian, but the Mystic Lord, that is Moscow, will be outrageous, a little bit outrageous to clear out the minions because he needs the gold right now. And he literally took the advantage of the situation, and that's the reason right now the Claude melted out the Lord. But 3 turtle into a row, they lose it out into the Retribution 50-50 smite. They need to take out the Retribution holder first, and they did it. It's only connected. We might gonna see the Moscow coming in for the engage. Before that, that is a scrum is happening. Kaizen goes down. Kazuma into the hand of Claude. This is Babylon, and now the flickered into the safer zone. MM and the Mage are the only survivor of this battle. 3 for none. The trade wars. It will get into the hand of Team Velocity Esports with the Lord as well. And now the Lord is marching onto the bot. Will it be the finishing touch to this game, Ray, or are we going to see some difference? Because 26 is the score, and the goal lead is kind of 7k. Yeah. It's pretty brutal and massive, and not really sure what they can do right now. Team Ethereum are basically pushed against the wall, and look at that, literally against the wall. Against the wall, but look at the damage from the Claw. Like, he literally busted down that chunkiest Hylos easily. That's kind of a level gap. Oh, use the shifting clouds and Howdy. Bottom lane, the Lord is coming in right now. Might be able to basically push in. Look at that. Blazing Duet. Oh! Okay, Moscow first. Zayden goes down as well. That is it as well. It's over. The minion marching's in. Claude gonna lock down the base. You're gonna try out something to secure, but spatial migration connected. That is the tech chart. And we're gonna see the bravest fighter as well. This is utter domination. Pure domination from Velocity Esports to deported each and every member of Team Ethereum to the losing side, because they will be clearing it out with a clean sweep 2-0 win for Team Velocity Esports, just up to their name, mid of a second to finish the game with a 2-0 MR. That's a statement. Yeah. I mean, even though you are in a hurry, even though you are in an experimental phase, Ray, still we're going to go for those counter picks, which going to have you a lot of problem. But I'm fine. It's fine. Ethereum, learning is the best skill you can actually have. So this game, just put it into the learning phase, come back stronger on the next weekly stream, I believe. Yeah. And what you said basically happened, Ash. The Martis was underwhelming simply because it's a make or break hero. You get the early, you make it work. You don't get it, boom. You're basically a reliability. And when that happens, it's sad. But, you know, one of the guaranteed things that actually I remember that players used to do was go full tank Martis. I think that is something you can commit to if early game doesn't go your way. And just play as a utility, you know? I feel like that works kind of better compared to basically playing a damage that basically could not scale up or do any kind of snowball. But with that, we are done with this series as well. We're going to be heading towards the next BO3 series. The final one of tonight is going to be between Team Twisted Paradox, which I believe reached top 8, right? And Team Clutch God. Going for a scrims in the BO3. So make sure you, ladies and gentlemen, you stay tuned on Algambo Esports. And thanks to all the viewers who tune in on just simple scrims. We appreciate you guys, and hopefully you're learning something. And we're going to be right back with MOBA Warmup Clash series.
Good evening and welcome back, ladies and gentlemen, to the MOBA Warmup Clash series brought to you by none other than Algambo Esports. We just had two back-to-back really fast, clean sweep matches, very dominating. So definitely one of the teams is taking it really seriously, while the other one is kind of experimenting, which is still valid considering it's scrims. And this is going to be the last BO3 series for the night. It's going to be between Twisted Paradox and Team Clutch God, like I mentioned previously. And this time around, it's not going to be Ash TC joining me. It's going to be Debbie on the casting desk. So welcome, Debbie. Yep. How you doing? I'm really excited. After a long time, we have been back together into the desk, right? So Yeah, it's another been a best of while. 3 series. This is like, you know, one of our Debbie, I want favorite to kind ask of you, why series, did you right? copy my pose? It's literally identical. Look at the hand placement, like down to the fingers. It's literally the Okay. same. It's not identical, it's same because I did exactly that. I copied it the way that you are doing it and Damn. just, you are my idol. Oh my god. Blushing intensely, The immortal coughing chose me to vanquish graciously. the shadows that plague this world. Okay. Stuttering? Cheeks heating. That's right. Okay, that's more like it, man. That's more like it. Wow. Fanfic exposed. Oh Okay. man. Oh, mean. Anyway, Look. after the post that we have, right? Let's see there who we got onto the one of our favorite kind of series that we always ever do, Algambo Scrims, right? And we have Yeah. Twisted Paradox, like you already mentioned, with Team Clutch God. They already have bans in. Wow, a Kalea Suyo and a Kaza Ben. Wow, this is like, I would say, this is a particular good setup. I'm Different liking the perspectives draft expose the already, same Ray. truth. 3, 2, Hmm. 1. Okay. They go for the Marcel by the looks of it. I mean, Marcel, usually you don't really get it open in a tournament. But I guess since it's scrims, they might be able to kind of practice it out. And yeah, I do like the fact that Twisted Paradox, I feel like they have studied Clutch God for sure. They don't want a single pick-off. The Chow still remains open, so there's a chance. But yeah, the Kaja and the Kalia does give you much better pick-off potential. But Clutch God, they come in with the Alice and the Kimmy quite early, or do you think it's decent? Considering there's a, Marcel, I guess it's good, especially the Kimmy. I think Kimmy is a denier, and at least it's a kind of a hero that you want to play against the Marcel, just because you don't have the ways to cancel out the blood flowing, right? The passive of an Alice with the Marcel. But look at this. This is a combination. The Marcel together with a Granger and a Lunox, which I did not expect. I expected the Granger to come into the second phase, not the first phase, but this will be highly counterable for the side of Clutch God here. But very solid choice of pick coming through for Clutch God. They picked away the Guinevere, which can become also a combination. It's gonna be definitely into the jungle because I'm not really a big fan of a Guinevere room. But then again, if you are looking at the Marcel, right, it's gonna be a tough time for the Guinevere to land all the jumps here because of the cancellation that he always gonna have. Yeah.
And by the looks of it, it's going to be interesting. We have obviously seen in the recent tournament that Algambo Esports hosted Battle for Crown that one of the teams, was it Twisted Paradox themselves? I remember there was one team that really like cleaned the slate with the Marcel and the Granger combo. Basically, Marcel freezes, Granger just spams the heck out of it, and once the golden hour is over, opponents don't even realize what just happened. They just get bombarded with everything. So yeah, that might be something that they're looking into. But yeah, there is a Kimmy in front of them, which can, kind of do the same thing if she's outside. If she's inside, obviously she's cooked as well. Going for the Lunox in the mid lane. Is it for the Alice? It should be for the Alice, but most of the time when you play a Linux, you don't wanna be, even though it's kind of a very true damage dependent hero, it doesn't really necessarily have to mean that you always have to go for the tanky. I think it usually has to do with the combination. I don't like the Lunox here in particular, but then again, if they are able to pull this out, it's gonna be very coming in handy. But God's God, wow, Beatrix making an appearance is already a very good combination that they can come to with the Guinevere. But I don't know about the laning phase main against the Granger. The Beatrix is like a 50-50, right? In lane, you're not winning, you're not losing either. But will it be worth it though? Because Twisted Paradox, they pulled away the Yuzhong. Now I hate the Beatrix. Okay, committing with the Yuzhong and the Fred, like you mentioned, and obviously the response is going to be to commit to another projectile. Looks like Team Clutch they're kind of trying to, I don't know, play considering the Marcel on their board. It looks like that. But it might backfire because Marcel is not the only threat. They do have the Gatot right now. It's an interesting draft to say the least. I'm curious to see what's going to be the outcome, Debbie. About the Gatot here, I like it because usually when you see a Marshall, you don't want to play heroes like the Cho, the Khaleeds, or even the Hilda because it have the passive right where you get stunned even if you want to go near. That's where the Gatot comes in, right? You don't have to go near whenever there is the ult coming through from the Marshall. Like you can just try to counter it with the Gatot, the AOG. But then again, I feel like they might struggle a bit into the early phases of the game. But then again, for the side of Twisted Paradox, they don't have that much of a pressure in early game either. So I'm pretty sure we'll see this game dragged on until and unless Twisted Paradox play around the Fredrin into the early phases of the game. Then both of them is gonna have to wait for the scaling for a late game. And with this, we're heading towards the land of Dawn, and we're curious to see how this one goes, the strategies, and how they execute. Obviously, myself, Ray, with you, and joining me is going to be a great analyst, Debbie on the board, with a great accent. I'm not picking up on it for sure, but yeah. Let's see how the early game goes for both of them. We have the Guinevere versus Fredrin matchup. Who do you think comes out on top, at least in the jungle-wise? If you talk about the jungle only, then of course the Guinevere is definitely going to be coming out because it is a hero that you want to pick after seeing the Fredrin or even the box as like mainly tanky ones. Yeah, that's why it have a good source of crowd control. And if you combine it together with all the combinations that the Guinevere can bring upon, it's basically like approximately 3 seconds of knockup. So yeah, that will come in handy for the side of Team Kotzka. But if we talk about the overall combination here, Twisted Paradox might have a better execution because they have a Marcel in a combination together with a Granger. So early phases of the game though might be a bit equalized here because there is a Lunox into the mid side against a gimme both of them scaling heroes. So it's gonna be dependent on how the junglers and the roamer are able to execute into these early phases. And we have to focus onto that first hurdle on who's gonna have the lead. Let's see what happens. Considering we have not seen the first blood yet, it might be the turtle lane where we might see things turn around a little bit. For now, though, both of the junglers, I guess they're just waiting for the reverse movement speed to go back, or do they want the first blood on the top lane? I think that's a risky play. Marcel just goes in for a little bit of that immobilization, but backs off. So the turtle lane, it's going to be the main caveat, the main place we will see the fight. Let's see what happens.
That's what we were waiting for, actually. But then again, interesting choice of emblem for Morpheus. You usually want to go for the Quantum Charge, right? But he actually went for the Concussive Blast. But oh, a perfect dragon. You know, usually you would think that this dragon might be wasted, but it's not. But look at the jump, though. Okay, good traction pulse. Oh, with the great ultimate, Marcel connects Wow. into 2. That means that's going to be a double kill. It is. The bazooka midair will land the moment the golden hour is over. And they are not going to be seeing much gold, only the golden bullets. And with this, 2 kills already for Twisted Paradox. Oh, Marcel going for a little bit aggressive right there. Unnecessary. Gets punished immediately. That's a kill trade-off. Taken away. Guinevere does get denied of her purple. Her farming slowed down a bit. I think this is good. This is very good for Twisted Paradox here. They got the turtle, they got the blue buff. They can lose Morpheus with that as well. It is just a rumor. And I don't think you have any business staying between the towers when you already get the objectives, right? Just back off. You don't need to do anything. But then the combination that they pulled off, this is what I was saying, right? The execution is so much cleaner from the side of Twisted Paradox here. And I think Clutch got were a little bit late with the response, right? Because the Gatot here in this scenario, why it is picked is to try to counter out the Marcel's stuff, you know, the Marcel doing the Marcel stuff, but they weren't able to do so because they were late with the turtle, right? And the level 4 was much faster, and I think they combined it together so well. And on to the other hand, an early game turtle, the first turtle into the hands of the Fredrin is definitely gonna be a good sign now. So Cut God, they need to be very, very careful. Yeah. Oh. Top lane, okay, that was the golden hour used, but oh, Beatrix, that's 3 people on top of you. AOG lands, but it's a little bit too late, but oh, great traction pulse. Connects into 2, able to knock up, and the Fredrin is going to be down. The next target is going to be, no, the Marcel will retreat with the movement speed. Was a good combo right there from the side of Team Clutch God. At least they get 1 trade-off, marksman for the gold laner, but damn, why is he shining so gold? I did not expect that. Guinevere on the top lane, still going after the Granger, but doesn't have enough damage, or does she? She does, kind of, but obviously that's the Granger. He doesn't have enough energy. I think she could have committed. Nah, I guess she doesn't want to take the risk. A little bit too long onto the top lane because kind of wasting every bit of the time, you know, for them, for him to. Yeah, it could have been so much better if they leave the goal for the Beatrix, because it's a very, very late game kind of hero. And with that overdue stay into the top side, it's definitely going to be another free turtle for Wensley. This is so great for them now. So this kind of micro decision makings really, really change the pace of the game, and I think Twisted Paradox also know this. And the double laning by Apex Emperor is definitely going to be worth it here. Oh, will they be able to get the Gatot? Oh, he survives with just a 1 HP. Barely scripted off, and we'll go back right now. Top lane though, Beatrix. Oh, she scraped off the gold, or was it the timer? Oh, it was a timer, my bad. For a second I thought, damn, she's fast, but no. Sadly, it was 5 minutes post already. She's not gonna get that goal advantage that much as she expected. I think it's still okay for a hero like the Beatrix to be one that's down, but then again, do you want to give the free farms to the Granger, who's already 2 kills ahead, but top lane? Oh, top lane, there's gonna be the Granger going for a full-on barrage. Blast him out, but there's going to be Kimmy with the traction pulse. Might be able to finally shut him down. Yes, she does. Evenom gets the shutdown. Next, Marcel with the ultimate. Great captures too. Will it gonna be enough though? Lunox trying to capture something, and she commits with the flicker. Will she be able to get the Kimmy? Yes, she does. On the other side though, let's see. By the looks of it, Gatot might get caught out. No, he doesn't. He's still surviving. Lunox, extended team fight, goes back a little bit. She'll be fine. Guinevere looking for an angle. Beatrix joining up the team fight once more. Here comes the Alice though, looking for an angle to maybe use up the Throne of Ruin. Might not be able to capture anyone. Unfortunately, lands onto nobody. Kind of wasted. And right now, she's going to be the one getting poked quite a bit. Beatrix comes in with a barrage as well with a bazooka, but has to go back. The Alice doesn't use up the flicker, just a blink of the S1, and she's going to be fine. 63. Turtle spawning in. I don't think Guinevere can contest this one. Not another turtle at that too, but definitely going to be a better sign for the side of Twisted Paradox here. But on the other hand, they know that they are onto the lead, so they are being aggressive, and you can, because they are so good in the way that they are able to get all the early leads. And now with the free turtle, yet again, this is definitely going to be doubling down, tripling down the amount of gold lead that they have right now, which means that they are going to be free to hit. But mid lane,
Oh, mid lane, we got the Granger. Will his rockets connect? Yes, it does. The Marcel Granger combo just hitting the spot really well, and it's definitely punishing the Beatrix the most. 3 deaths already right now. They take down the mid tier. That's going to be opening up the map even further. Right. This is like, the mid lane turret is like a doorway for the jungle, right, onto the opposing side, and they have cracked that open, so they are very free to go in and have a very good position onto the jungle as well. And top lane, not really a good sign. Look at Seka. Yeah, Beatrix all alone once more. That's going to be 4 people jumping on her. Unfortunately, you're not surviving that good. Traction pulse, but it's going to get light ulted by the Lunox. She's going to go back. Nice statue, but yeah. I love our streamer doing this, by the way. He shows the the death cam kind of those first person games, they show the dead body. Yeah. It's like when it's a good skin also you wanna see it right a bit. But one thing I would like to mention is that this is the kind of mistakes that teams usually do into the 7th or 6th minute of the game when they are onto the losing side. 6, You don't 7. wanna go back. 6 okay, you don't wanna pull that off. But yeah, it's just like you don't want to send your very squishy backline alone into a lane, even though the tower is standing, because your mid lane is already gone. Be with that person, be with the gold laner that you are sending alone, so that they will not be ganked upon. They are very vulnerable in that situation, and I think that is a micro mistake that Team Cuts got actually made, and now they will be suffering quite a bit now, because up to the second death on Senga, it was actually fine because they do have a very good damage source from a Venom who already have 2 stacks. But then again, 4 deaths down for a Beatrix is not really a good sign, right? And moreover, they don't have any anti-heal, not even on a Venom, which could have been a preferable item of choice after the Sky Piercer. And I don't think they will be able to contest this slot either, because we see that the goal coming through from Apex Emperor is already way ahead from Senka too. Yeah. And it's already going to be 10 minutes into the game. Lord obviously taken down. And Clutch God, they're looking for the clutch play, but the Marcel, 100%. He's being the threat right now. The main reason that they're kind of struggling tremendously. What can they really do is a big question. And what will they do? I don't think they have many options except for, I guess, defend. What will they do, honestly? Oh, this is kind of tough, man. They are not the one with the Marshall either, right? So it has to be dependent on how well they are going to be defending, because best case scenario, the Beatrix is good in defending onto the Lord as well. But Flicker. Okay, top lane, we're going to be getting the Marcel ultimate coming in. The Wombo combo from Apex Emperor just hitting the spot with the bazookas non-stop. And right now, Black Dragon comes in with a flicker as well. Not the flicker, the petrified combo. We're going to be capturing a bit. Yes, he does. He captures the Guinevere. And right now, the next one is going to be the Alice. It's a double kill. It's a full wipeout, ladies and gentlemen. It's 13 kills to 3. Twisted Paradox are just on a different league. Can they make it a defense? Man. I don't think so. Gatot all alone. Oh. Can he do it? Kimi's back though. Might be able to do something perhaps. No, absolutely not. Too much damage. Blue Salvia is going to be able to capture the Gatot. And with this, the game is over. And with this, we're going to be heading to game number 2. Twisted Paradox just clearly going for a full-on domination. Yeah, this is amazingly well done coming through from the side of Twisted Paradox, man. Paradox always reminds me of another card that I admire so much. Yeah, I'm not bringing it. Maybe Twisted can be the next favorite thing I have, but that was amazing, man. Everything was actually very clean. And up to the very start of the game, the first turtle especially, we were talking about how much of an equal clearing that they have into the mid side, right? Because it's a Kimi and a Lunox after all, with so much items necessity that they have for them. But onto that turtle fight where the Yuzhong
her guy was able to pop the dragon on time. It wasn't even late, it wasn't even early, because that is the perfect timing to pop the dragon, because the turtle was already half and there was no way that the other side could have entered the turtle pit because of the presence of the dragon, and it was already dangerous enough. And he chased him away, and they won the win onto that fight. Get the turtle, get the buff, get a kill. They lost a kill, but it's the Roma after all. And after that, when you have a utility jungle onto your side and a Marcel who want to stay into your jungle as long as possible, when they had that lead, it was already they were already playing with their winning conditions, and I don't think there was any response coming through onto the side of Cuts God, that despite their name, there wasn't any cuts that they were able to pull it off. Maybe their name is just that the fact that they're praying to the clutch gods above, you know? Yeah. God. But yeah, Twisted Paradox, they're doing pretty good. Like their performance, obviously, I think they were in top 8, was it? I think they were in top 8. Top 8. Wow, that's a amazing place to be in. Like, most of the time teams have these kind of one or two players that sign, right? Like this player in particular will be doing well than the other. They will be doing better than the other. But for Twisted Paradox, it's kind of like all of them are in equal style. Like they have known their targeting. They know what they are doing. They are going toe to toe with they're into their lanes as well, and they know what is supposed to be their style, what their job is supposed to be. So they don't outshine each other. They are playing together very well, and I think that became the factor of why they were winning. So it will be so good if they draft again in a team fight manner, a team fighty draft. Yeah. I really wonder if perhaps maybe banning out just the Marcel, maybe give them the edge, maybe, because I feel like the Marcel Granger combo definitely impacted their whole decision making and how they were supposed to rotate and everything. So yeah. Let's see what happens, Let's see what happens. The sides have been switched, obviously, and it can mean one thing, which is obviously okay. They ban out the Zushin on the first pick. What? I think I have a reasoning for them. You do? There's some squads that don't want to play the Juxin or even the Freya as well. It's like them that they have another composition in mind, and the Juxin really doesn't do well with the work, even in the first picks, because I've seen enough teams that ban the Juxin when they are in the first pick. They prio the forest so much. One of my favorite hero, by the way. I can play it, but I like it. Perspectives expose the same You truth. don't have to play it to like it, right? Yeah. Do you like Fanny? Huh? Do you like Fanny? I love her design. I love everything about her, but I absolutely loathe playing her. I can never learn that hero. Honestly, Mhm. if you gotta learn Fanny, you gotta do it very early on, man, and you gotta do it with a new account. Not something that is up in Immortal or something, because if you're gonna do, you're cooked. Nobody wants the newbie Fanny to be in their lobby, man. Yeah, learning Fanny is not for me, man. I'm not that into that tryhard anymore either. I'm more into the data. That's why we're casting, right? Data. That's what. Oh, we have a very good excuse for that. Hey, I'm still cracked on the jungle, by the way. I'm still very cracked on jungle, by the way. 0 retry misses. Wow. Yeah. Oh, because you're never jungling. Born with talent. No, I recently jungled. Okay, I did not miss a single objective. It doesn't matter the fact that I secured it with my Leo mode first skill. It still means something. Damn. Too bad. Leomord's gonna go away soon enough. Well then, let's see though. Talking about jungles. Cutscott, they actually prioritize onto the user, which I don't recommend doing, but maybe they're comfortable with it, or maybe it's also a denial pick. But Twisted Paradox, though, they have the Guinevere all open. If you want to go for the Kalia Guinevere combination, never mind. The Guinevere, the Kalia is actually banned. But I feel like this time around, the Lunox is also gonna be a comfort pick here right now.
Yeah. Going for the Farsa and the Grok is okay, but Farsa, is it just for the range? Not too sure about that. Considering there's a Guinevere right there, who's definitely Yeah. going to be jumping on top of you. The Farsa seems very fishy, even though she's not a fish, she's a bird. It's a bird. I don't get the Farsa pick, honestly, but hey, it's a scrims. Maybe they're trying to test something, you know? Maybe they'll wombo combo with the Grok and the Yuzhong, and maybe the Farsa will just blast from the distance. Maybe it might be. Oh, Come on, look at that, Dexter. Ray. It's our The Alice pick showtime. negates every picks from God's God now. Because eventually, if you talk about a Yuzhong and Alice, the Alice is always supposed to be winning. If you don't count the previous game, because the other lanes were getting cooked. So the Time Yuzhong and was tide wait for no forcibly man, doing better than nor the girl. Alice. But if we talk about same skill set and same decision making, the Alex will be having a better time. I've been And waiting even for too against the long. Farsa, closing the gap between the Farsa and the for the Elise is so much easier, right? Because she have quite the race, and I think now the Farsa will have to be very have a very big dilemma on whether to bring the Purify for the Guinevere or bring the Flicker for the Elise. So that is gonna be why we hate the Fight! Farsa. It's Fight for usually a the second phase ultimate pick, answer. but the bans coming through from Paradox though were very good because they ban away the marksmen. But they don't have the marksman for themselves, right? Unless they go for the Granger or the Harris. Valor and royalty in a dead Hmm. body. Yeah. Okay, they committed with the Leo mode. I was just talking about it. But When you roam. that means Guinea roam, yeah. I mean, it is still better because right now Guinevere can Yeah. fully commit to the Farsa, which makes it even worse for Team Clutch God. So let's see if they'll be able to kind of, clutch it. Let's see. The last two picks coming in right now. What is it going to be? Has to. I don't know if they can play the Harriet now. Even the Grander looks so iffy. I am Damn, cut vengeance Scott. Okay, incarnate. Moskov. I was actually trying to suggest the Moskov, but then again, we saw the Elise, right? We saw the Lunox, right? It's definitely gonna be not the best case for Lunox. Every marksman is not the best for because of the presence of the Elise anymore now. But I think they went for the Moskov because he can actually bring the Purify or even the Flicker if it's necessary, and I think it's the safest bet. So Clint. I'm gonna be honest with you, Ray. I've never liked the clean draft. Sorry to Bolty, but clean winning lane against Moscow, but in team fights, the clean needs the early game so bad, man. I would say I would exaggerate it to needing at least two turtles, and most teams doesn't really have the capacity to do it. Yeah, I think the Clint. I just can't get over it. I knew it. The Bolty roasting was coming. There was I'm just no sorry, way. man. There was just no Okay. way. But yeah. Well, I'm glad you mentioned it. But yeah, the Clint is a make or break marksman himself. He's just a pure Yep. burst, not exactly the most DPS marksman. You land like 3 shots and then you're done with it. He's not exactly something like a Leslie either that provides the most amount of true damage. So yeah, I understand why you'd have that feeling, right? Yep. Sorry, Bolty, but yeah. The cowboy ain't just working. But hey, let's dive into the Land of Dawn. This is going to be the second match between Team Clutch God and Twisted Paradox, who have 1 point lead in this BO3 series. Let's see what happens. Debbie, who do you think will get the first blood? First Oh, damn, blood, I think already we'll get- Gwynny. Already he's just trying to dive, and I was about to say that maybe Avinom onto the first side can make something work because early phases of the game, the first side is definitely going to be having a better time, right? But then again, the Guinevere is being so annoying. But mid lane this time around will be into the hands of Clutchcott, so this might change the pathing or even the composition for the side of Twisted Paradox here because in previous game they were actually winning. Look at the stun. Oh, great sudden immediately. Yep, Avinom will fall right now. Like we mentioned, the Farsa pick, man. I understand you wanna, test out something on Yeah. scrims, but there was a Guinevere. She's literally counter. It falls kind of into the ego draft. I'm gonna be honest. You can't make it On- work. It's supposed to be, your counter, right? That's literally how it says. It's your counter. So yeah, I think that Farsa is 100% she's gonna struggle.
and she's on the flicker too. So that was No what the purify. Elise no purify. The Elise kind of forced it for the first to go for the flicker, right? Oh Yeah. man, now this is definitely gonna be a very vulnerable bird. The Guinevere Vulnerable. being the hunter, vulnerable. The Guinevere being the hunter if poaching is allowed. It's not, but in the game it should be. It might be as well. But yeah, we were talking about the winning lane as well, right, into the XP side because it's definitely gonna be for the Elise, but not in a scenario where you're gonna have to go in a 2v1 situation because level 4 is completely necessary with the expansion onto the rivers. This is definitely gonna be a good start for the side of Cloud's God for the turtle here, but one jump is all it takes for Twisted Paradox to turn the tide around. Yep, one jump is all it takes. Let's see the retribution. What is it going to be? It's going to be the expert. Wow. How did he get Damn. it? Despite the knockup, he still gets it with the immunity of the blast. And right now, looks like the side of Team Cloud's God might be able to get the kill, but no, Twisted Paradox still retaliates with a triple. Okay. Might make it a fourth one. It is going to be, yep, 4 kills for 1 turtle and a 1 trade-off. The side of Twisted Paradox, they twist the favors onto their side, and right now, they're again on the lead. There are, sometimes you usually want to have a very good skill and risk, and they did that for Twisted Paradox. They lost the turtle, so nice damage. That's the first one, by the way. But back to the point though, Twisted Paradox, they know that they already lost the turtle, so they went ahead for the fight because they want to do that. They know that Cloud's God would want to go back because they already gotten the objective. There's no point in dying there into the turtle pit, and Twisted Paradox were like, nah, we're gonna take a body or two if you are gonna take the turtle away. So now the goal is more in favor for the side of Twisted Paradox because they won that fight even if they lost a turtle. So this is a trade out. Every time Twisted Paradox are better into the decision making, and I like this because a clean, right? 2 turtles, let's go. 2 turtles. Let's see, on the bottom lane though, looks like someone else is getting turned into turtle soup. It's going to be Senka on the Moskov. Oh, Farsa trying to go for a very aggressive play, but that is not worth it. Lunox also almost made the same mistake inside the turret, barely scraping it out. Blue. Why is the name spelled out like a saliva? What is that? Saliva. Yeah, what is that? And what, like the avatar? You know, the Oh. James Cameron avatar, not the bending one, but yeah. What is his name? The real- Salvia. Salvia. Okay. This is actually what I was talking about, right, for the side of Twisted Paradox, when they have the equal amount of synergy where no one outside anyone else, and this is what we got. Because if we have a repeat of that, the bottom lane synergy was amazingly on point too, because one dive and flicker out without getting the turret out, and one dive in again, take the kill and back away, and now the turtle fight is going on again. Twisted Paradox might eventually won these two with the dragon already gone, and they want to reset. Oh no, this is bad for Cloud's God. Yeah. Let's see. The turtle place. Alice looking for an angle. Oh, that's going to be a knock-up. Here comes the Feather A strike as well. Alice with the Throne of Ruin on the turtle. But then, Leon, how are you doing it with her Xbox, securing the turtle twice? But at the cost of obviously getting taken down himself as well. 2 for 8, but how is Leon doing it on an Xbox? It's not supposed to be possible. He's somehow like securing the turtle on the worst jungler possible. I mean, worst objective securer. I mean, he can do it, but still. Bottom lane, looks like the Lunox and the Clint combo might work out. Oh, 1 HP. Oh, close. That was a good decision making for them to not be aggressive. Look at that. Hey, that's a mistake from Blue Salvia. It gets taken out. Saliva. And right... Sorry, man. I'm sorry. Nah, it's fine. You match my way. You know, I like that. But yeah, Aaron gets taken out, and the next one is going to be make sure you're not dropping any saliva, right? But yeah, Clint right now, Apex Emperor has 4 kills, and only now he got the Sky Beast. Honestly, after 2 kills, I would have committed to it. But okay, so that means we have to count from a post 4 kills, right? And I just dropped a bit of saliva as well. Damn.
Oh man, because Blue Saliva died, so unfortunate. But finally, that's gonna be a clean doing well for the first time I've seen in Algambo scripts. So it's like last time also we've seen 3 cleans in a row, but none of them won. And that's why I have a very very poor opinion about a Clint. Unless you're a Severo man, just don't pick the clean. That's what I was gonna say. But Apex Emperor, they are making this work because of the combination that they have so far. Very good jump. Oh, really good jump with the Lunox coming in with a combo as well. Federer strike, but Farsight just way too vulnerable. Gets taken out. Oh! Blue Salvia captures the kill, and on the other side, Morpheus does get taken out by Sensei over here. Going for the Black Dragon form, coming up with the damage. Damn. Might be able to go for it. Is he able to? He cannot chase. Can he chase? He does try to chase. Will it be enough? It's not. The Leomo takes him down, but Leon joining back takes down the Lunox as well. Yep. Can he make the miracle play? I don't think it's possible. He doesn't have the shield anymore, so he cannot commit to the turtle. Unfortunately, this one is going to be a free one for the side of Twisted Paradox. After 2 being stolen, this is going to be in their favor. Alice still going in a little bit too extended, I believe. Should have retreated. And she is going to... She survives it. 5-12 score. Yep. Lost turtle into the hands of Twisted Paradox. Look at that. The first build I was assuming it would have to be the Hypnosis for the Clint, but he actually went for the Endless Battle. That is a very good damage source, but you kind of need one more damage item. So I want to see what kind of build he want to go for, because Clint have a versatility on builds. No, it's kind of wonderful because it's kind of usually you go for the Berserker as well, but you can actually go for a bit of a physical attack on top of that without any attack speed. Whoa, Look at that. whoa! That could have been a Flicker? really good thing. Yeah, that could have been a really Yeah. good thing. But oh, Alice popping in. Might be able to. Oh, the Guinevere is going to be followed through. Oh. Senka regardless falls. That's 5, what, no, 4 members on top. You're just not surviving that dude. But yeah, the Alice, Yeah. she's gonna retreat. But that was some good combo right there. They kind of planned it. You know, they had the wall. Moskov was gonna stun. But, you know, Clint smelled it. He was like, hey, this wall is a little bit too convenient. So he gets out of there. There's a slingshot definitely on top, but look at the jump! Guinevere just committing so much to the turret. Wow. Oh, that is a good SOD. Takes down Morpheus, but will it be enough damage to take down? Yes, it is. Shutdown secured for Sinka. He might be able to Wow. actually make a little bit of a comeback right now. He gets the shutdown goal, which is going to be giving him a little bit of an edge right here. Let's see what happens. Okay, mid lane, Yeah. they're putting in the pressure, but I think that's going to be a goner. Xbox doesn't have the Firaga armor. Can we see the bills? How much gold did he get by shutting down 2? I think, okay, he's gonna be a bit close. 1k still, 1.3 I would say. Still far ahead, far behind. And he's not onto the DHS as well, so that was unfortunate for Senka. This is also one of the reasons why you don't usually wanna have a Moskov, right? Because he takes too long to get the farm, and putting it against Clint as well, that is a losing lane already. And you know that Cut Scott weren't able to win out, especially into the early phases of the game. It's kind of made it wait for them, even though they got the turtle. Those turtle kind of saved them from the snowball to roll out of control for the side of Paradox here. But this is gonna be a clean Lord take for their side here. Look at the jump! Beautiful jump popping in. Senka immediately gets shut down himself as well. Evanum gets taken down by the Lunox on the back end with the Ruby did the combo on the back end. Xbox trying his absolute best as much as possible, but the Alice dishing out a lot of damage, but she does get taken down. Hawkeye falls in. 3 members for just the 1. Twisted Paradox still coming out on top. And right now, they're looking to put this game to a stop by ending it as soon as possible. They have the Lord already. Let's see how the lane sync is going to be. Clint right now quite a bit farmed. 7 kills on board. I believe like 20 stacks on a Sky Piercer as well. This is a kind of a game that Twisted Paradox should end early. They don't have to drag more than 2 lords, because if they are, then there's gonna be a good chance for Senka to have the farm that he's required, like 2 items more, and he's definitely gonna become online. And you don't want to do that. You have a good targeting with the Lunox as well. I agree, but then the Moskov into the later part of the game is very very sleek. He cannot catch him most of the time, so it's gonna be the best idea for Twisted Paradox to not give away the lanes again. Freeze out onto the minions, get the turrets as much as possible. Look at that though. Okay. Xborg, he's just done. Before I could even respond, he's goner. Senka gets the DHS, so the Trinity is done, but how much is the Trinity going to help? I believe he definitely needs that
Rose goal, I believe, not the Wind of Nature. Yeah, Rose goal yeah. will definitely help him out quite a bit. The shield is going to be helping them to clear the Lord really fast, and the minions as well. But now Yep. it's no longer. They got to defend it real time. Real time, man. That's a beautiful wall. I mean, just the wall in general. But that's gonna be a June. Look at that. Oh, beautiful. The Wombo combo coming in from the Alice. Might commit to it. Oh, Grok. Nah, no backup. Unfortunately, Hawkeye, you went in deep, hoping your No. teammates would follow up. You know, it's the typical EXP lane experience. But I would say that was a very much of a forced attack on his part for the LA's Hawkeye. You could see the minions were clearly not in the turret. You had no business going in there, man, or else it was a very good set. Now they wasted the flicker, they wasted the ult, and one death's down to drain. But then still gonna be okay because Twisted Paradox, they are so ahead into the goal. 4K gold is what they have, but it will be much preferred if they don't throw again. And one thing for sure is that they need to sync onto the lanes and not give any minions into the hands of Senka, making stir off. But look at that jump again. Let's see. Bottom lane, Grok is going to be able to use the tech charge to get out of there. Is it enough though? Let's see. 9-20, score still remaining. They don't really get anyone. But yeah, the game is going to be continuing. The goal lead, 5k into advantage of the side of Twisted Paradox. Lord's going to be coming up in 20 seconds. Let's take a look back into the builds once more. Oh, wait! No, the Yu Shang immediately gets bursted. They're just following a textbook combo. Gwyn jumps in, Lunox jumps in. It's just done. It's just over. But hey, Blue Salvia, what is that? You don't have your light? He didn't have? Okay, he did not have it. So Lunox is down. On one side, Eren gets fallen down, which is surprising as well. On the other side, what's happening? Leon. Oh, SOD connecting in for Morpheus. But that's a Leo mode. He doesn't want to commit to it. He doesn't want to go for a 1v1 right now, especially to a Leo mode that's 2 levels ahead. And right now, I believe they're going to be going for the Lord. What? 2 tap. Happy bolty noises. Happy birthday, man. I'm so sorry, Apex Emperor, but you know what? I think it has to do something with the team because they were actually winning into the late, into the mid lane. Even though they lose out to the turtle, they always win out into the team fights. But then again, the rotation he did right into the early game because they know that the clear is definitely going to be having a much better time into the clearance as well into the early phases of the game, and he got the first kill, right, the first blood in the mid lane side. I think that helped him a lot, and with the Sky Piercer up to 40 stacks already. Yeah, this dude is well farmed, and yeah, man, this is what you want to do when you play a clean and get that early game momentum and do not lose anything. Exactly. And what can they do? Honestly, it's just kind of they don't exactly have anything. It's not exactly a game that Team Clutch God can win. It's more of like if they want to win, they just have to hope Twisted Paradox makes the blunders. It's not a game for them to win. It's for Twisted Paradox to lose, like we say it, because they're very ahead right now. They have around 10,000 gold. Oh. Reminds me of one of the skits from Viva La Dirt League. Do you know that? Nope, I have no idea. They say the gold in a very funny way. 10,000 gold! But yeah, on the bottom lane, we're going to be getting the Lord. Hey, here comes the Wombo combo once more. Alice goes in it, and so does the Guinevere Evenom. It's just completely the victim right now. He's the prey, the bird that's getting poached. And Monster Kill secured for the Clint, who's so ahead. 11 kills on board. It's just a massacre completely. Clint is just going for a double. Might make it a triple right now. Will he? Oh my goodness. So much low HP. Can Moskov make the play of the century? He might be able to. Oh, he's done it. Double kill. Can he make it a triple? But the base might be over. Oh, wait. So what's happening? The base is defended, actually. Guinevere might get taken out as well. Yes, it is. Basically an unofficial triple kill. Yep, this is what I was talking about. This is not Team Clutch got to win. Paradox kind of overextended too much deep into the base. And the game goes on. This is the Moscow late game that we are talking about. Oh man, do not drag the game up to 2 lords. Come on, Twisted Paradox, that was the second lord. They could have just gone onto the inhibitors, yet they wanted to focus a bit onto the kills as well. But now I'm pretty sure Senka already got the items. Maybe even the Malefic
gun if he actually went for it, because I think it's gonna be necessary here because of the way that Twisted Paradox are able to close the gap onto him again and again. Now, Cutscott finally have a chance to play something, right? They play for the Moskov, don't let him die, be around his side and just die for him. Actually, even if you get dived upon, just die for him. It's okay because he have the clutch factor now. He might be the main clutch god of their team, so they can actually play for him. But then again, Paradox are so ahead that even if they throw another time, the second time, they're still gonna be needing a third throw from them that can make clutch gods winning situation to be rising to like more than 60%. But with the Lord already here spawning with the long lane set up for the side of Twisted Paradox, I don't think they can. Yeah. Lord secured. Or should I say Diva secured? Diva. I mean, Lord she's a Diva? diva, isn't it? Lord Diva. Yeah, she sings, man. Yeah, she's a singer. Or maybe a siren. Singer. But yeah. Oh, I mean, I it think must she... be. Yeah, she must be a siren, considering her design, and we are in the Yeah. rough waves, kind of like the patch, like a watery patch, might be signaling on the Wow. floods in Philippines. Oh, But yeah, oh no. 18 minutes into the game almost. Let's see if it's going to be the end. Lord gets pushed towards the Whoa. other side. Let's see. Will they be able to make it? Oh, Oh, Flicker! Wombo combo coming in with the Alice with the Totem Fluid and the Guinevere's Violet Requiem gonna be on point. They take down 2. Is it going to be 3? Yes, indeed. Apex Emperor captures another victim. Make it a 4th one. And with this, it's a full wipeout right at the end. And they end the game with a clean sweep in this MOBA Warmup Clash Scrims. They have the clean sweeps that we can see here. Perfect set coming through from Morpheus, man. The Guinevere I wanted to be, but never could be. Oh, man. There was a beautiful jump onto the perfect members. That's what you get for not bringing the Purify against the Guinevere. This is the whole reason they picked the Guinevere, forcing the Purify to come through. But maybe this is what they weren't accepting of. But Epic's Predator, man, he's gonna have to get that MVP of the game because this is a clean and he is so hell-bent on proving me wrong with the stacks that he have onto the Sky Pizza as well and the BOD. This is what I was saying about the build, the versatility of the 100% push coming in from Senka. Insane on his part. Quite an elongated game, honestly. Almost pushing 18 minutes into it. But that's going to be it for now. Congratulations to Twisted Paradox for still coming out on top and still being quite a strong team. And we're looking forward to even more scrims and in more future tournaments. And with this, ladies and gentlemen, we're going to be taking farewell for tonight. But make sure you tune in tomorrow for more scrims. And we'll see you tomorrow, right? So, Debbie, you want to say anything? Okay, looks like Debbie has left me. But yeah, don't worry, we won't leave you. Make sure you tune in tomorrow at Algambo Esports. Subscribe if you haven't. And we'll see you tomorrow at MOBA Warmup Clash.